अंधेरी काफी है रात, किसे करूं मैं वो बात, अपने मन में खोया मैं गम में की, दिल तो है तेरे ही पास, कैसे मैं करा मैं कारोबार, लंबी रातों में भी मैं बना मैं कलाकार, करके याद तुझे अब लोग है बुलाते मुझे, कारोबारी कलाकारी जेबे भारी दिल खाली, सब लिए बिलो जिम्मेदारी की है माँ को दिलानी वो सारी, भाई जी मेरे यहाँ lit audio we just taking hits, stress on the bags we don't relax, so you know it's kinda legit, hey कारोबारी कलाकारी to hustle I'm making some bucks, yeah they be thinking we be running out of love, fact is that we be running out of fucks, they would be creeping and just not enough, I got some G's to deal with some thugs, out here they flexing and just faking love, we be not coming from bandos, look how we turning to ends or so, drop a dollar on a hater, show him later that we are only for bankroll's, I got some G's in an aggro, she tryna met me, I'm hella cold, rocking no ice cause I'm tryna go. What's up Blaze Night back again with a live stream. मेरे को जरा एक मिनट देना, मैंने जरा लेटेंसी मेरे को जैसे चेंज करनी है स्ट्रीम की, एक सेकंड. जब बैक आगे fighting your life, cause I know you're fighting for life, yeah, never give up on the side, in which you fall in love and then decide, yeah, you know that you better grow, while they be not doubting your growth, I hope you be fighting your life, cause I know you're fighting for life. अब लिखता नहीं हूँ, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, तू एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करे क्यों, जिक्र होता है हर मसल में, चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, जो एक जगह टिकता नहीं हूँ, सर करते हैं तेरे दिल में, पर है तो शिकवा करे क्यों, जिक्र होता है हर मसल में, चाहते पर दिखता नहीं हूँ. I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी. Light it up, that's how I see you. खुद को मेरी नजर से देख. If I were you and you were me, if you were me. मैं ऐसे टूटता के टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतज़र, मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना, दिल डूबे मंजिल लगे से सवाल, देखे हैं नूर बहुत, ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक, हर खौफ से आज़ाद कर दो मेरी ज़ात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो, गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, ना तुम्हें आशरम ना हमें आए मौत, मैं सेनू इस मिनट नेक्स्ट मिनट हम साइको, इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो, ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है, सेंड माई चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए, आई गॉट बिल्स मर्द के अलग होते कायदे, अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काय के, फ्यूचर दिखता नहीं है फ्यूचर इज व्हाट आई से, वो साथ खाएं कहना पड़ता नहीं वो भाई थे, आई डू अ डाई फॉर द गैंग, बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे, साल के रात तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवाह यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज, I rap for a purpose ये करियर एक cause, you expect me to be perfect and I'm just full of flaws, कैसे लिखता हूँ ये verses क्या करता हूँ महसूस, मैं बिना ताज का बादशाह got nothing to lose, I'm crossing lines just to cancel out the booze, अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज तू,
दिल था मेरा गोशा है सुकून एक, क्यों बना गई है इससे बाजार तू। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, It's late, Wilson, एक sir. जगह टिकता नहीं हूँ, अटक क्यों रहा है? तेरे दिल में Kindly let him know that his cars go 2s and 3s are on in past. 10-9, sir. दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता Trade, interview टाइलर ले लेंगे, नीचे आ जाइए ना थोड़ा। दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े बिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले, थप्पड़ ये गाल पे इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, लाया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे पूरे करूँ आज, अब इस हाथ में वो आग बेटे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बेटे, ये इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जानलेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ूं जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा रैप। हाँ वही कोड रेड के लिए मसाला स्ट्रीम में मेरे वाह मेरा वैसे ही टाइटल पहले से था सर्वर में घुसने से पहले ही। आईने को तोड़ दे यूं जोड़ते अल्फाज भाई, लफ्ज कैसे तोलते जब बारी है आवाज भाई, दिल मेरा साफ में इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन ना आता तबाज नहीं भाई, फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई, सर अपना नोच रहे हम सोते हुए भी सोच रहे, ख्वाबों में भी अपनों के खुशी के आंसू पोंछ रहे, I ain't a role model आज भी on the road अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले शोज में, डील होती क्लोज उनके साथ मुझे होश नहीं, इंडस्ट्री मेरे पेपर नहीं वो मेरी दोस्त नहीं, रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने अफसोस नहीं नहीं अब मौत से मुसाफिर। अरे इतने दोनों वाद यास यास यास, अरे वो बीच में थोड़ा एल पे गया था बट उसके अलावा फिर अभी बैक, अब इंटरव्यूज पे ध्यान है। और बताओ आरपी क्लिप्स क्या चल रहा? वेलकम टू लाइव स्ट्रीम बाय द वे। सारा बंदा था पता नहीं अब मिलेगा क्या पता, मिले ना मिले मुझे क्या, मैं तो पता कोई हूँ। Despite this express 324 going 1041. अभी बहुत मसाला है रेडी, लेट्स गो। मांडवली करना आ रहा है भाई, भाई आरपी के लोग मांडवली करना आ रहा है बीच में। भाई आज का थोड़ा सीन हो गया स्ट्रीम की, मेरी थोड़ी डीले बढ़ गई है, डीले थोड़ी ज़्यादा चल रही है मेरी स्ट्रीम की यार। नॉर्मल पे लो पे डालना था, हमने गलती से नॉर्मल पे रख दिया। कब पीढ़ी का बिन का भी वीडियो डाल दो, नहीं वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। बोल नीड टू टेक इंटरव्यू, ठीक है। एक बंदा है जे विलियम करके, ले लूंगा। चल अभी ले लेते हैं, ठीक है। आगे में मोमेंट रुक जा। और उसके बाद होता क्या है, मैं अभी उसको बुलाता हूँ और जस्ट हम सेइंग कि तुम्हारा गाड़ी चाहिए तो आके बात करके लो, बट
आई एम गोइंग टू अरेस्ट हिम फॉर ऑल द थिंग्स ही डिड। उसके बाद मेरे को फिर कॉल आता है। मतलब वो पीडी आके गया? हाँ अभी वही आने यहाँ वही वाला है, तेजस वेलकम टू गाड़ी लाइफ के की। लिए। ठीक। एंड इसका और हर कट्टो बार की गाड़ी का क्या सीन है? मतलब वो तो है उनकी आप गाड़ी वो खुद ये क्यों थे लेने आ कोड रहा रेड में ग्रीन बॉय तो सर स्पीडी। ये आई डोंट थिंक सो मैं उड़ती था दिखती क्योंकि है मैं सर ये। कोड रेड में वहाँ रहता नहीं है तो आ रहा According बस to Miss स्पीड कट्टो की की गाड़ी। लगता है आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है हम तो Yeah, सब्सक्राइब this ही नहीं side, किया अरे भाई Mr. Katana Rishad Patel. देख लेना If I आरपी don't क्लिप see से you टॉक्सिक को at मैं ना MRPD जानता in next 5 minutes, there would be a warrant out on your name. Thank you. Okay. नेक्स्ट 5 मिनट में अगर कट्टो की गाड़ी, उनकी गाड़ी है ना नीचे जो है आप सिल्वर जेस्टर बोल रहे हो, या कौन सी है उनकी? ऑडी उनकी एक सेकंड Audi R8 कट्टो आई ऑडी R8 कल आई थी। ओके। सर कट्टो एंड ये इन्वॉल्व नहीं है, कट्टो के लिए ये वेट कर रहे थे ये लोग आके। सुनिए वो मैं कट्टो वाला सीन बताता हूँ सर। हम्म। हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, गन शॉट्स आते हैं मल्टीपल, वी रिस्पॉन्ड देयर, वी फाइंड कट्टो की गाड़ी वहां से एस्केप करते हुए। तो देयर वाज एन एक्टिव एटीएम चेस कर रहे थे, उसके बैकअप में सडनली 3 से 4 गाड़ियां आती है। गाड़ी के सारे नंबर एविडेंस हमारे पास हैं, वन गाड़ी विद द नंबर प्लेट एनिग्मस। नहीं तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि इनको बचाने ही आए थे ना वो लोग? हाँ नहीं सुनिए सही। उसके बाद सुनामी आ जाती है, सुनामी के बाद मैं कट्टो को कॉल करता हूँ कि आपकी गाड़ी हमें मिली है, मैं आपसे बात करनी है। ये भी सही है, उन्होंने खाना बोला पड़ेगा कि लग रहा आप एक काम करो, अपार्टमेंट आ जाओ। ग्रीन वाला हुआ था लेकिन बहुत तुम्हारे आई वेंट देयर, आई मेड अ कॉल टू हर। हाँ अच्छा वो तो बहुत पहले का है यार, ये लोग आके चालू हो जाते हैं गाड़ी पे, वो वाला याद है मुझे लेकिन वो बहुत पहले का, मैं ये बोल रहा हूँ अभी फिलहाल नया कुछ। मैंने कहा देखो इन्वॉल्व तो है ना, वो भी कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व हो गया सर, अब हो गया इन्वॉल्व। एंड सेकंड थिंग प्रॉब्लम मैं कट्टो की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। इनका एक दोस्त दूसरा सिचुएशन है। हाँ तो कोई ना, वो दूसरे सिचुएशन का भी आप लोग कर लो तो बुला लिया। अब तो लिंक हो जाएगा सर, अब तो लिंक हो जाएगा सर। इनका दोस्त कौन है वो, उसका नाम क्या है? आके पीडी का हाई कमांड तुम तेज कैसे कर सकते हो? रीजनेबल टर्मिनोलॉजी, सीधा रीजनेबल कॉस्ट, प्रोबेबल सस्पेशन, प्रोबेबल कॉस्ट में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये दूसरा क्या नाम बोला आपने? वो शायद वो 391 किया था उसने, रिपोर्ट खोलना है मेरे को। ऑफिसर आना, तो मैंने उसका वो डाला, वो जिसने कॉल किया था उसका नाम क्या है? एक मिनट बता रहा हूँ। वो कट्टो की गाड़ी कल 80 में डेविस बिलो का हर बार का है, हर बार आता है, इन एवरी टाइम ये डिसरेस्पेक्ट। नहीं कभी भी आराम से बात वो जो और उससे ज्यादा है ये गेमर डेज का प्राइवेट नंबर से कॉल किया, वो कौन I'll tell you about the gamer days, just give me a moment. BELOV। इसका क्या है? वेट इसके क्राइम देखते हैं ना। इसका तो प्रोफाइल क्लियर है। हैं? कैसे सर? अभी मैंने देखा उसमें असॉल्ट ऑफ अ डेडली, असॉल्ट ऑफ अ गैंग रिलेटेड शूटिंग, क्रिमिनल पोजेशन ऑफ फायरआर्म क्लास 1, क्रिमिनल यूज ऑफ फायरआर्म क्लास 1, मिसडेमेनर, बहुत सारे चार्जेस है इसका। डेविस BELOV राइट? हां। और उसका सिटीजन आईडी है JQB। हां हां JQB भर के चार्जेस है यहाँ पे किलो के भाव में। या इसका फेस रिवील हो गया, होता है हागा गया है, हागा गया है। कोई ना छोड़ो, तो मेरी MDT थोड़ी बग आउट हो गई। हैपेंस। मतलब ही इज अ नॉन कन्विक्ट राइट? यस डेविस ऐसा नॉन फेलन है, नॉन फेलन। आ रहा हूं। अरे कट्टो की गाड़ी का बताओ मेरे को कितने हैं? बाहर आना, रैन बाहर आ रहा है। हां कोई आजा अंदर आ। यस सर। ऑलराइट I'll take the interview. Your name, sir? My name is Jake Williams. Could you please show me your ID card? Yeah, sure. One second. There you go. Do you have a consent for a search? Sure, you can search me. Yeah, I'm a common. नहीं सर, रिसेंटली तो ये 7 जुलाई को थी लास्ट। मेरे को कॉल पे थ्रेटन्स के इंटरोगेशन रूम में ले लीजिए। आओ तो ले रहे हो आप? हाँ ले रहे हैं। आ जा, अगर आना तो आ जा। चलो। You have right to remain silent, sir. Whatever you say can be.
डिस्पैच रूम में ले आओ। नहीं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर ही ये ले वेटिंग के लिए हो जाएगा अगर ज्यादा क्रेडिट वो ज्यादा वो कर देते। तो आएंगे तो ना, उनको आने दो, करवा जब तक देंगे, नहीं तब तक शिफ्ट करवा देंगे और क्या। इधर आ जाओ सर, आ जाओ सामने। हाँ बस Alright, let's just start with the introductions. On the interview panel, on the center, it's me, Sergeant Ryan Knight from the BCSO, Field Training Supervisor and HR. On my right is Corporal Jim Street, Field Training Officer, and on my Corporal of LSPD, and on my left is Ray Gibson, Sir, can you let him know I'll be recording Senior Officer LSPD, and part of the FTP. Got that, okay. 3 to 4 would be going off comes for interview. Could you please give us your brief introduction? Yep, okay. So, I'm Jake Williams. I am 29. And the thing is that I was a part of this department before. I remember. While I am looking for reinstatement, I did command and I did ask them the protocol for that. And they told me to just go through the regular process as of now. Since anyway they are recruiting right now, so utilizing the regular process would be ideal. Hence I came to this method of getting reinstated actually. Sure. And the thing is, I used to work at the NYPD, the New York Police Department, so I have the experience of being a cop. And I have done my schooling from the Chicago Police Academy. Yep. So that's what I learned. I went to New York, did my duty out there, but there was a certain amount of reasons out there where I felt my capabilities and my abilities were being probably misused or not given much attention to or importance to. So I felt that what I could offer to a department was just being kept behind because of politics, which I did not really like. Like for instances, if I'm good at something, I would expect a senior to at least like keep me some like a simple way where we had a team out there called which was an investigating team, like how there is a CID in multiple departments, where I was just kept out of it. Even though I was good at it, I was kept out of it because there were already people included and there was no room ever, because I waited for around 7 months where I said I'm looking for a way to get into the department, to learn more in the department. No, I wasn't even saying that I want to just come and take over the department or something like that. I wanted to learn. I wanted to get, like, because I am not good at investigation. I'm not 100% good. So I wanted to learn from my seniors. And the only way I learn is by getting slowly into the department. And within the 7 months, there was not even a percentage of effort made from any of my seniors at that point to even like teach me or give me any form of guidance. And I thought that there was no way my skills were improving in any way. What I had, what I was good at, I was good at. What I was bad at, there was no improvement. So I decided that I would need to look out for a place where I can keep a city safe or keep a city secure, as well as learn from my seniors. So I thought that coming to Los Santos at that time. All right. So as a part, I know you're there for reinstatement, but we still gotta get over the basic interview stuff that is. I understand that. SOPs, and we need to get over it. Just give me 1 second. Just give me 1 second. Sure please. Sure thing. Yep. Sorry for that. All right. Also, where should we start? SOP. Let's just start with SOP. Could you please tell me what is the basic chain of command? Basic chain of command is where it's the basic chain of command is where officer at a certain rank is supposed to follow the command of an officer at his immediate above rank or any other above rank higher. So the thing is that if I am an officer and a senior officer gives me a command, irrespective of if that command is right or if the command is wrong, at that point I will have to comply. I will have to go ahead with the command and do as per my senior officer says. However, if I do feel that that command was incorrect, once the entire situation is over, I would have to have a conversation with that officer, discussing that entire scenario and why I felt it was wrong. And if he's not willing to understand my point of view, or if he come to a conclusion, fair and good. If he's not willing to come to a conclusion, then contact my higher command to explain to him what I felt was wrong. But on the situation, the chain of command would never break. Exactly. Because that's how professionality is maintained in a PD department.
हेलो, अरे यार मेरा ओके रायन सर, रुको बे, मेरा माउस का इशू है। रायन सर, अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकंड। No worries, हेलो no हेलो worries. हेलो, It's completely fine. भाई मेरा माउस नहीं काम कर रहा। एक मिनट देना। हाँ हाँ, आराम से कोई दिक्कत नहीं, कुछ इशू होगा। No worries. पता नहीं मेरा ये काम ही नहीं कर रहा था, क्या बोलते अपना माउस माउस काम करना बंद कर गया था। कहाँ गया? जिम सर सुना? अभी चल बस ठीक है। कॉन्गो आ गए। जिम सर बोलो कॉल सर। सुना राणा सर का? क्या कॉल दी? वो एसएमजी रखवा रहे हैं वापस कॉर्पोरल से। हाँ रख लेंगे, क्या सीन है? मिल कैसे गई आपको? मिल कैसी की? तो है कॉर्पोरल है ना वो। सिचुएशन थी क्या कुछ? अच्छा कॉर्पोरल हो गई क्या अब? अब क्या पहले से ही वो थी। चलो यानी मैक्स 2-3 हफ्ते और, उसके बाद हमें भी मिल जाएगी। हाँ ना यस 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 यस, अब आ रही है? हाँ आ रही है। यार क्या तकलीफ है भाई। अरे कोई नहीं, बुरा चलता लगा। है मजनू। चलते फिरते स्कैम हुआ। यार मेरे को तो लगा गोवा वाले से मिलके गोवा चलने का। अबे पागल है क्या? वैसे कारनामे है ही नहीं मेरे। कंटेंट गेटिंग ऑफ कंटेंट ऑन टॉपिक। हाँ बोलो हाँ, सर। continuing on, could you please tell me what is negotiable item and non-negotiable item? The term as well as
the items Okay, themselves. so negotiable items are those type of items where if you're involved in any situation where there are suspects opposite us or potential suspects opposite us, and they've asked for something in return of either a hostage or either of something that they have of high custody, there are negotiable items are those items that we can offer to them as a trade. Whereas All right. non-negotiable items are those items that which we cannot offer to them. For example, a non-negotiable item would probably be anything that is available to us at the PD, whether it could be a PD gun, whether it could be a PD, our badges, anything, our tasers, anything that is off the police force. We cannot provide that as any form of negotiation with a criminal or with a suspect. However, a negotiable item is something where if they would want from some form of say food, water, if they would want a passage, while a free passage is not an item, it's still a form of negotiation that can help them get a demand, that can help them reach out a way of trying to probably run away from us or try to probably escape from us. All right. Could you please tell me exchange of hostage comes under negotiable or non-negotiable? Like I do not understand the question completely. Could you please tell me the exchange of hostage? Does it come under a negotiable demand or a non-negotiable demand? You mean exchanging one hostage for another hostage? Yeah, exactly. That's non-negotiable because I wouldn't want to put another civilian's life in threat to save one civilian's life. And would there be any specific, everything has an exception. So does it have an exception or no? I mean, honestly, that I would say there would be exceptions, but that is very situational based, and I can't really think of a situation where it would be ideal. In majority of the time, it would be non-negotiable, but it completely depends from situation to situation. Because irrespective of who the person is as a hostage, I as an officer cannot really risk another person's life just to save one life. I would do my best to save that one life and ensure nothing happens. Okay, now say me one thing. Mm-hmm. Okay. Okay, there was evangelical robbery going, Mm-hmm. and someone like knowingly or unknowingly took hostage deputy mayor or mayor. Okay. Now they came to know, and they will like, we need a PD chopper Mm-hmm. in demands in exchange of the hostage. Mm-hmm. What you will do? I will first politely talk to them. I will inform them that a PD chopper comes under something that is provided to us by the government. Hence, I cannot provide you a PD chopper. If you all could be nice enough and tell me some other demands in exchange for the mayor, we would really acknowledge that and we would really appreciate that. If they listen, well and good. If they don't listen, I would have to move ahead and increase the way I'm talking to them. I would have to ensure I am assertive towards them. I would ensure that I would tell them that these demands cannot be fulfilled. You can either choose two options. The first option would be where you change your demands and make it something that I can fulfill, and then you can leave from here without harming the hostage. Or the second option is where if you do not comply with that, if you are very stern that that is your demand, which we unfortunately cannot fulfill, I would be forced to breach in. So these would be the two options I would give him. Now, what was the life of mayor? The life of the mayor would, the thing is, if I am going to breach in, I'm going to ensure that the mayor is also safe while I'm doing that. I'm going to ensure that if I am in command of the situation and if there's any form of threat towards the mayor, the first action of a breach would be to neutralize that threat first. So that the mayor would have enough time to probably just leave that premise while that person is getting neutralized by us. So it wouldn't be us breaching in, going for the people around the mayor, going for the people at the back. The immediate threat would be the first cause of action that would be neutralized. Moving ahead, we would neutralize every suspect out there. So a breach-in would also have a proper way to do it, not just walk in, cuff kar lo sabko, bahar aa jao, because that way the mayor would be shot. Continuing on, could you please tell me a bit about PIT, the full form as well as the conditions and what does it mean? What does the term mean? The full form. Okay, I'll be very frank out here. Mm-hmm. I do not know the full form of a PIT. Okay, Right. I know what a PIT is. I know how to execute a PIT, Okay. but I do not
I don't know the full form. I don't want to lie about it. I don't want to like make up a full form. Thank you for being completely transparent with us. I'm just asking, could you please tell me about, if you don't know the full form, let's just continue. What are the conditions and what does a pit mean? Okay. So a pit is basically a maneuver where you either disable a vehicle, slow down a vehicle, halt a vehicle that is probably recklessly evading. The way that the conditions to it are, you need to first ensure that there is no other civilians or civilian vehicles around, because if you perform a pit and that pit does by chance unfortunately go unsuccessful, there are chances it could hit a civilian, there are chances it could hit another civilian's vehicle, which would cause problems to them, and then the blame would come on to us. The road should be clear. So that there are no public properties or private properties damaged in any way. This should be done probably on straight roads, so that at turnings where the PD does not have any information where what is there on the right or what is there on the left does not cause any problems out there. So these would be the ideal conditions. Obviously, the speed limit of the vehicle in front matters a lot, because if the vehicle is probably above 60 to 80 miles per hour, that vehicle can go heavily out of control on a pit. And that is not going to be in our control, not going to be in the control of the person driving that vehicle. So if it is above 60 to 80 miles per hour and the PD does pit a vehicle, that vehicle can cause more damage than actually neutralizing a suspect. And the last thing would be the way the PD pits is, if they go and just like head on hit the vehicle, that would obviously not be a pit. They need to align their front two tires with the back two tires of the suspect's vehicle and give a slight nudge on either the right or the left to make the vehicle spin out. So performing it accurately also helps cause least damage. Otherwise, you'll be damaging either the PD vehicle or the suspect vehicle. And we are not there to do that. We are there to neutralize the suspect and not the vehicle. Okay, one scenario on this. Okay. Okay, suppose there was a 80 going on. Okay. ठीक है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं and they are not even stopping. Okay. So it's like after that the commanding officer of your same rank commands for the situation. He go for pit. He's not even a high command or anything, but he is the commanding officer for the situation, and he feels like you should go for pit. Okay. But he's of same rank. What do you do? Well, like I mentioned in the start, if any officer is given command of the situation, I understand that the seniors would have enough trust in him that वो command कर पाएगा. And if he is entitled as the commander of the situation, I would have to listen to his commands, because अगर वो commanding है and मैंने उसका बात नहीं सुना, there's no reason for him to be commanding then, right? Like either I will give my calls, then another officer will give his calls, the third officer will give his calls, and there won't be any form of like decorum. हर बंदा अपना अपना करेगा, and that will be very unprofessional जो कर रहा है PD. That's why if an officer is given the command that I have to pit and he is the commanding, then I would do that. If I did feel he was wrong after the situation is over, I will talk to him about it, ताकि future में वो ना हो. But on the situation, I won't go and like ये करो वो करो, because that is breaking that command. Okay. Next up, just want to add one thing. If there is time, if there is enough time out there to change the decision, I might provide him a recommendation, and then the recommendation is up to him if he would like to go ahead with it, if he would like to still continue with the pit. So it completely depends on the situation, but I would have the liberty to provide a recommendation depending on the time we have. All right. Next up, could you please tell me about warrants? What are the types of warrants? What are they used for? Okay, so there is a search warrant. All right. Where like there are two types of search warrants in my opinion. One is a vehicular search warrant, and one is a house search warrant, which can be considered as a raid warrant into a person's house. There's also arrest warrant. So a vehicular search warrant allows a person with proper documentation to. If of course a PD has probable cause that there's something wrong, they would not really have to get a search warrant for a vehicle. For an arrest warrant, again, if a person has any probable cause that they have committed a crime, or they are an accomplice to a crime, or they are a suspect that we have evidence for,
we can issue a arrest warrant, which gives PD officers a time to find that person, arrest him, get him to custody, and then investigate further. We also have a raid warrant where we know a person has a lot of illegal things at his house, probably multiple illegal substances or government items or anything of that sort. We would get a raid warrant where police would have the right to enter the person's house and check his personal belongings to see where or if he has any of these items hidden. So even in search warrant, you can get into the person's house. Even with the raid warrant, you can get in the person's house. So what is the difference between them? So the thing is, with a search warrant, I believe there are two types of search warrants. Search warrants. One is a vehicular search warrant, and one is one is a vehicular search warrant, and one is a search warrant for houses. Search warrant for me, that the difference is that when you're going for a search warrant, you're going for a particular thing. For example, if I know that a person has an illegal weapon inside his house, I would get a search warrant that would just provide me permission to find that illegal weapon. If I do find anything else that is illegal in his house, I cannot really take that from him. I will need to create a raid warrant out there that would allow me to search everything in his house, and anything and any form of illegal items will be confiscated then. Search warrant only would give me the permission to search and find everything in his house, but confiscate only what is mentioned in the warrant and nothing else. So if you find anything illegal there, you won't confiscate it if you have a search warrant also? No, I will not confiscate it. I will probably seize the house. I would ensure that the house is under lockdown. During that lockdown, I would create a raid warrant. I would submit it to the higher officials. I would get permission to perform a raid where I would get every legal item out and then execute it. Because if I go in for a search warrant and I take something else illegal that I am not authorized to search for, I would be breaking my I would be breaking the laws myself. So if he would go to court and he would say that ये लोग ये ढूंढने नहीं आए थे, ये लोग ये लेके गए जब ये ढूंढने आए थे, the judge will straight up tell me I did not give you permission to search for that, hence why did you do it? And I won't have an answer. So I will put barricades. I will not let anyone enter the house until I get authorities to confirm that yes, I have an official raid warrant, and now I can go and take everything that is illegal. And once that is done, then I would remove the barriers. All right. I think we are done with this part. Do you guys have any more questions? From my side. Last thing. Okay. How do you perform a on-foot pursuit? Maximum officers, minimum unit. Okay, so an on-foot pursuit. But when you say on-foot pursuit, do you mean a pursuit that was an active 1080 in a vehicle that's converted to an on-foot? Yep. Okay, so how I would execute it is depending on the amount of suspects. I would ensure that if there are 6 suspects, I would ensure around 8 officers to be on foot. However, if there are 1 or 2 suspects, if there's 1, I would prefer 2 officers. If there are 2, I would prefer 4 officers, ideally double. And I would recommend the rest of the officers to be in their vehicles, because there are always chances that the on-foot people get backup. They get additional units to come and help them out. And at that point, the people in their vehicles, they'll be prepared to again perform an 80 once they get into the vehicles. However, if that's a complete on-foot chase, I would have 1 suspect is there. I would have 2 officers chase them down. First, I would ask the officer to give them verbal warnings. The verbal warnings were telling them to stop, surrender. Those warnings would be loud and clear, and that would happen around 2 to 3 times. If the suspect does not really cooperate with us, he does not really stop, he does not really surrender, then I would tell the officers to go for a tackle. The tackle would be done twice, where they would be tackled once, allowed to get up. If they again flee and evade, would be tackled again. If they still do not comply on that, then I would have 2 ways to deal with the suspect. Way number 1 is firstly understanding the way he's running. If he is going to use any lethal force, or is there any potential that he would use any lethal force, that would give me the way of doing 2 things: either using my baton or either using a taser. The baton would hurt him, and I would have to get him medical attention immediately after. So I have to keep that in mind, that there would be some EMS to help me out immediately, because I do not want that person to go unconscious in any way. The taser would also require medical attention because he would get electrocuted. So I would first clearly tell him that if he does not stop this time,
I would have to beat him, or I would have to use a taser on him to neutralize him. If he does not stop, then one of those methods would be the way I would go ahead and neutralize the suspect. Okay, last question from my side. Okay. Okay, suppose, by the way, I would like to ask you one thing. Validity period for raid warrant. Can you repeat that? Sorry, I had something in my mind. Sorry, can you repeat that? So, like, what is the validity period for a raid warrant? Validity period for a raid warrant. I am unsure of this. Ideally, in every county, the validity is generally decided by the judge, because like the last time I did a raid, that time the judge had signed us a document where they had told us we had exactly 3 days to execute this, and after 3 days, this warrant would not exist anymore. And the thing is that warrant could have a 1 day period, and warrant could have a 7 day period. But you can ask if for you're it, but at talking the end, about the judge decides. arrest warrant on someone, that is generally in general counties that last for a period of 7 days. But a raid warrant has a signified day duration mentioned by the judge. Because we can't, because the suspect, if someone is getting raided, request for the a suspect generally particular knows they're limit, getting raided. but It's not at the something end that it is is done decided where by the we're judge. waiting for them So to yeah, leave he's their right house, on the raid or we're warrant waiting for as them well as the to arrest warrant. not be at home and slyly go and perform a raid. The raid is where the suspect knows that the PD is coming to check on his property, and hence he is also supposed to be told a day where he is available and can be at home, so that we get access to his house. So it depends on what the judge provides us, what duration the judge provides us. Okay, so suppose the validity period for a raid warrant is 1 week. Okay. And you already raided with the proper procedures, proper masters and all. Okay. You already raided the house. Okay, but can you use that warrant for raiding again on the house, same house? No, we cannot. That warrant allows us to raid it once. If we go raid it and we do not collect all the evidences, or we feel that कि यार ये miss out कर लिया, or we feel that after the raid उसने कुछ डाल दिया, we would need to again get another warrant for that, because that warrant allows us to raid the house once and only once, and it is our responsibility कि वो घर पे कुछ भी है, any form of items, any form of evidences, वो time ही लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो घर हमारे लिए खुला होगा, because eventually at the end it's private property. So that warrant allows us to raid it once, enter the house once, perform our duties once, and once we are out, once the area is completely code 4 and we remove all the barricades, barriers, that time we ensure that okay, the warrant is closed. The warrant is closed and our duties are fulfilled. Got it. Ryan, anything? No. But yeah, I had one thing in my mind just right now. Could you please tell me what's the difference between a traffic stop and a felony stop? Okay, a traffic stop and a felony stop is when a felony stop is when we know there's a felon in the vehicle, a person who's committed a big major crime. A traffic stop is if somebody's, for example, jumped a traffic light, or speeding, or cut a lane incorrectly, took an illegal U-turn. Stuff, people like this, we perform a traffic stop on them, where they are given a ticket, a small form of fine. But when there is a person who's committed a major crime, a person who's basically either stolen a vehicle, or driving a stolen vehicle without knowing, these people are suspects. So we already have clear information that they're suspects. Therefore, for them, we perform a felony stop. Alright, so that concludes the SOP part from my side. Gibson, do you have anything to ask? No. Alright. Alright. Next up, we'll move to 10 codes. So, from basic, intermediate, and expert, what is your, how much do you know about 10 codes? Is it just basic level, intermediate, or expert? So generally, I know all my 10 codes, but the thing is that at every county, the 10 codes. I know, I understand. Yeah, there's no problem in that. There's no problem in that because I know a lot of counties 10 codes, so I can still comprehend. All right. So then I can say I'm fairly good at the 10 codes. All right. It's gonna be a. It's gonna. You will go. You will ask, but just hold on a second. It's gonna be a rapid fire. You need to answer it. If you can't, you just say pass. Simple. All right. Is that clear? All right. That's fine. Gibson, go ahead. All right. मैं आपको बता देता. I will ask two ways. One, I will ask the 10 codes. Second way, मैं आपको उनकी definition बताऊंगा. You have to tell me the 10 codes. Okay. 10 codes. Definition बताऊंगा. Okay. Fair enough. ठीक है, समझ गया. So it's the both way. Okay.
Okay. So what's 21? 1021? I pass. All right, 1060. I passed this as well. This wasn't in my county at all. All right, 1078. 78 is additional backup, like it's on priority call. All right, 1071. I pass. All right, code 100. We didn't have a code 100, but I would understand as it's a highest priority code that would require all units to come on board on the situation. All right, what's 1099? 1099 for us was a GTA call, but for certain counties it is a call of where all units are required, whether the situation goes on high priority. But I would say still it's a stolen vehicle call because that's what my county offered me. All right, 1020. 1020 is location. All right, 1014. 1014 is a downed officer. 109. 109 is repeating the call on the radio. All right, 1034. 1034 I pass. All right, silence on radio. Silence on radio is 10-3. All right, affirmative. 10-4. Need urgent backup. 1078 or 1077 depending on the situation, but urgent is 78. All right, need matic. I'm not sure about this one. Drug sale. 1038. Going off duty. 1042. Stolen vehicle. Depends again. It's sometimes 1099, sometimes 1067. It depends. What is like? It depends on what scenario it is. That's why. Fair But enough. I would call it a 1099. All right, felony stop. It was a 1012 for me in one of my counties, but generally on the radio we would say felony. Like we need 78 for a felony stop. So yeah. All right. What is code 6? Code 6 is when the situation is all clear and there are no suspects. There's nothing around. Either the suspects we've lost visuals or either they are already in custody. Once the situation is completely over, all evidences are taken. The situation goes code. Sorry, you said code 6, right? Yeah, code 6. My bad. That I was mentioning code 4. I heard code 4. I'm sorry about that. Code 6 is when you have to investigate the entire area around. If there is a suspect or if there's any. Yeah. That was my bad. Apologies for that. No worries, no worries. What is 1072? 1072 is a hostage situation. All right. Return to pillbox. Return to pillbox. Or pillbox. That is 1015 if I'm not wrong, but I'm not sure. So I'll just pass. I don't want to give like something. All right, then suspect in custody. I pass that. All right. 1020. 1020 is location. 1023. 1023 is when you arrive at a location. 1025. 1025 pass. All right. Requesting vehicle registration info. Pass that. All right. Person with a gun. I pass that. 1031. No, I don't know this one as well. All right. I think we are good with the 10 codes. Okay, next question will be, I will give you 5 codes, okay? You have to arrange them in due to the priorities. कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायर कौन सा था, सबसे कम कौन सा था, okay? Okay. First will be your drug sale. If you want, you can just write them out. आप उनको लिख सकते हो. 1 second. हाँ. First will be your drug sale. Second will be your bank truck. Okay. Third will be your medic down. Okay. Fourth will be your officer down. Okay. And last will be your all units Arjun, let's go. respond. At the 67. What will be the last thing? All unit respond. All right. So
Ideally, I will give my reasoning as well for the order I'm giving. From this, the highest priority will ideally be all units respond, but it will basically be situation based. It will basically be what the high command, if there is a major situation happening, the high command will know when to actually call for each and every unit, and when the call is given for all units to respond, that means there is some situation that is of such high priority that overrides each and every situation that's currently happening. Hence, all units respond will ideally be the top priority situation. When it comes to officer, next would either be the officer down or the medic down. Now, the way I would prioritize it is depending on how they have been down. Because if they've been down either by, I would say they've been down in two forms. One is, say, they've been down in by either a gunshot or by somebody shoot. You just get a call of officer down and a medic down. उन दोनों के अलग separate call होते हैं. You just have to prioritize them. That officer priority first or EMS first. So then I would primarily go for the medic down, then the officer down, then the bank truck, then the drug sale. Okay. I think we are clear with the 10 codes. Let's start with the situation based question. Ryan sir, you want to continue? No, you go ahead. I'll ask later. Right. As per your experience, मैं आपसे कुछ question पूछता हूँ. That you're in the 80, okay? Okay. You're the primary unit. Okay. The second, you have only one unit behind you, which is the secondary one. It's a high-speed chase. Suddenly, जो आपकी गाड़ी होती है आगे वाली, they took a left turn. You also make the left turn, but जो आपकी secondary गाड़ी होती है, did not वो नहीं कर पाती, turn नहीं ले पाती है, and get hit a pole. And you notice that कि जो भी officers गाड़ी को चला रहा था, he's down now. So what will be your call? My call that time will definitely be if we are the only two officers in the chase and there's no other officer, my ideal call would be to back out from the chase. I get he's a suspect, but then the officer life matters. If he goes unconscious, then the primary vehicle that we are chasing can do anything to me. That means I'll be the only officer in the vehicle. I'll be the only officer chasing that suspect. And if they do not really lose visuals, if they cannot really escape, they have the full potential to probably just take me down, hit me down, do whatever they want to me. And that is the first half of the thing. The second half is officers' lives always matter. We have to ensure that while we are ensuring the civilians' lives and everyone's lives are intact, we have to ensure that our colleagues are fit and fine. So if there's any form of medical attention required, I would let that suspect go. I would try to get as much evidence possible, like their number plate, like the car model, the make and model, what he's wearing, if possible. So that I would keep that in mind, that if I find such a car roaming around, I would have the potential to probably stop him at least. And then I would move forward and try to secure the officer and ensure he's completely fit and fine. All right, let's move to next situation. You are at a party. आप वहाँ पे security provide कर रहे हो. You and your colleague are over there, and वहीं पे we have the city mayor, few EMS department, एक वहाँ पे डॉक्टर भी होता है EMS डिपार्टमेंट से. सडनली वहाँ पे एक मिसहैपनिंग हो जाती है. वहाँ पे जो सिलेंडर वगैरह रहते हैं, वन ऑफ देम जस्ट ब्लास्ट ऑफ, ओके, ड्यू टू विच योर ऑफिसर गो डाउन. जो EMS होती है वो भी वहाँ नॉक डाउन हो जाती है, एंड द मेयर ऑल्सो गो डाउन. सो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज टू सेव देम? आप सबसे पहले किसको बचाओगे वहाँ पे? आप क्योंकि एक बारी में एक बंदे को बाहर लेके जा सकते हो टू द EMS. So what will be your priorities? They were down through a mishap by a cylinder blast, right? Yep. So there are no suspects. It's just an accident that has taken place. Yeah, it's just an accident. So because of that, I would definitely ideally, am I on duty or off duty out there? You're on duty. I'm on duty. Okay. You have to save them all, okay? All but right. you can take only one at a time. So out there, at first I would first secure the doctor. Because once the doctor is secure, he can also help in medical assistance if anyone requires it. Then I would secure the mayor, just because that holds high standing in the government field. And then I would secure the officer who would have the enough capabilities. Like, we know how to deal with such situations. And the thing is that if it's such a situation, if somebody's hurt and they start to panic, that wound increases, and the chances of them putting themselves in self-threat increases. As officers, we know how to take care of ourselves during those situations. As a mayor, he might panic. So I don't want us to be losing the mayor just because of him probably panicking. Hence, I would
help the mayor out second, and I would help the officer out third. All right, मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ. First, I think EMS are the most capable person to handle this kind of scenario. Correct. उन्हें पता है, तो I think he will be the most calm guy. आप उनको बाद में भी बचा तो ठीक है. And next thing, जो भी EMS वाला था वो he just go down. I don't think so he will be able to help others at the point. No, but the thing is that Rest is up to you. Yeah, so I'll give a counter reasoning for that is that if I am a doctor, my friends are doctors. If the like I'll have a lot of friends in the medical field. If I save a doctor and say there's only one doctor working right now, and there are multiple people down, I will know that I can contact a couple of more people that can come immediately at my call and help these out. If I'm a mayor, I might not know that many doctors. Or if I'm an officer, I might not know that many doctors. But if I'm a doctor, I know people from the medical field. So if I require any form of urgent medical assistance, I know the right people to talk to. Hence, a doctor comes at a very highest priority because he will know how to save the rest. He will know who to contact, when to contact, where to get utilities from, anything. Even if he's injured, he can at least provide the right pathway to get us the right facilities. So that's why I would still save the doctor first. All right. Okay, I will go with one more question. You're in a food chase. Okay. आपकी जो सेकेंडरी यूनिट्स हैं दे आर ऑन द अदर चीज जो सेपरेट हो जाती है एक जगह पे जाके क्रिमिनल से. सो यू आर जस्ट बिहाइंड. आप जिसके पीछे हो ही सोलो एंड आपके पीछे आपका कोई बैकअप नहीं है. दे आर जस्ट फार अवे फ्रॉम यू. फार अवे फ्रॉम या वन ऑन चीज. यू हैव अ टेजर आउट. ओके. Suddenly you see जो भी आपका सस्पेक्ट है he just climb up the stairs, not the ladder, stairs. Okay. And जैसे वो stairs के ऊपर चढ़ता he took a left turn. By the way, sorry to disturb. Ray, we need you as a Alright. ओके मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ उसके बाद आंसर सुन लेंगे. ठीक है. Okay. जैसे ही वो टर्न लेते हैं he just take out his gun and just point at you. जैसे आप स्टेयर्स ऊपर क्लाइंब करते हैं टिक द लेफ्ट टर्न आप देखते हैं इज पॉइंटिंग गन एट यू. ओके. सो इट विल बी योर कॉल कि आप वहाँ पे क्या करोगे. प्लीज रायन सर आप देख लेना. ठीक है. आई हैव टू गो. सॉरी हाँ कोई ना हाँ आई हैव टू गो. बाय. Okay. आई हैव अ नाइस इंटरव्यू buddy. हाँ तो अगर if I'm walking up a stairs with a taser chasing a suspect और उसने turn लिया and on that turn he removes the gun and points at me, I would just put my hands up out there. I would cooperate with him because out there I have to value my life. अगर मैं उधर like I would talk to him, I would try to get out of the situation. But अगर वो gun point कर रहा है and I just have a taser in his hand, I can't risk tasing him because if I do try to tase him, अगर मैंने कोशिश भी किया and गलती से I missed, I would be shot down immediately. So I need to value my life out there and ensure that I'm safe. So I would cooperate with him and I would abide by what he wants. Alright, continuing on, supposedly you are in a situation, right? And there is a lot of chaos happening around on the radio and like basically even the high commands themselves are doing the chaos as well because supposedly the commanding officer situation takes the command and he's giving order but that command is overridden by another high command. Then another high command steps in to sort that chaos but he also gets involved in that mess. So how would you handle that situation? Ideally that would depend on what would be my rank in that situation. Because if I'm just a mere officer, if I'm just like at the lower rank compared to all my other seniors. Supposedly, let's just say for that also, I'll give you are the rank of either a corporal or sergeant. You are in the low management. Okay. So if I'm at a corporal or sergeant rank and there is a lot of radio chatter happening, who would ideally be the commander of the situation, or is that undecided? The command of the situation is taken by a sergeant. The situation is going all haywire. So the chief steps in and takes and gives command, overrides the command, but that still causes even more ramble. Then a lieutenant steps in to clear that mess out, but he also gets involved, and the situation again goes all mess. So it's just getting messier and messier. So how do you handle that? So what I would say is I would ask since that time I'm already heavily involved in the situation. And the chief and the lieutenant have come later on into the situation just to try to fix it up. And if there was a lot of chatter happening on the radio,
First, I would request for a 10-3 on the radio, just so that the radio silence. Then I would request on the radio if this situation could be completely managed by the first commanding officer who was there in the situation, because he knows exactly what is going on. And after that, continue to first provide the situation. I understand that after the situation ends, I would probably be called at the captain's office. I would probably be told by the chief that how can you say that on the radio. But then at that point, that would be my ideal time where I would explain that if we did not do what we did, the situation would go out of hand. If the chief would understand my point of view, well and good. If he wouldn't understand my point of view, I would be ready to take on the whatever punishment he feels ideal, because I feel that at that point, instead of arguing what should be done, how should be done, the commanding officer knows exactly what to be done. And if he does not, it should be his responsibility to take on a higher commanding officer and ask for advice as to what should I do. So it wouldn't be everyone coming on the radio. So that's how I would tackle it. All right. Next up, you have a situation where you've got EMS personnel down the chill yard, and you are there as you have a Tahoe unit with you. Okay. And the other officers are busy in supposedly, let's say, a bank robbery which is happening nearby, let's say the Great Ocean Bank. Okay. And there is no other EMS available. All officers are occupied, but you are not certified for the Air 1. So how would you tackle that situation? How would you rescue him? What would you do? There are all the officers at a bank robbery. There are no other EMS individuals. An officer is down in Manchiliad, and I only have a ground unit, correct? Exactly. And I'm not authorized to Air 1. Yep. At first, I would go to the dispatch. And he was actually shot there, not he was actually shot there. You got a shot side report as well from that area. Alright, so I would go to the radio where the bank robbery is happening, in whichever, like, the police radio. I would inform them of the situation. I would say that, like, as officers, we always diversify our force. Where we do not send units here and there. We do not use all our units at one situation. Yep. So I would say that at the bank robbery, the Air 1 authorized unit to come to Mount Chiliad. Even though I know how to fly an Air 1, and if I don't have a license, I cannot remove an Air 1, because I cannot break rules just because I want to save someone's life. That is not how the police work. So I would request for the Air 1. On the meanwhile, I would use my Tahoe and go up Mount Chiliad just so that I could collect as much evidence as possible out there and see if the area is clear. Because if he has been shot down, there could be more people there. There could be more suspects there. So it becomes a priority call. So I would ensure that since this becomes a high priority call, I would ensure that our maximum of our force is moved towards Mount Chiliad, whereas we have enough force at the bank robbery to ensure that we secure the hostage safe and sound, and there's no really any form of mental or physical damage caused to him. All right. Situational awareness की questions चल रहे हैं, Tyler. Joining us on my left is Sergeant and Field Training Head of the FTO department. Yep, Tyler. So yeah, that I think concludes the interview from my side. Tyler, do you have any situational awareness question you wanna ask? Yeah, I wanna ask one thing. Go ahead. Sure, sir. To me, previous experience क्या है like तुम्हारा? So I have actually worked at the New York Police Department. The ranking system was similar. I did reach the corporal level out there. I did apply out here as well. But the thing is that my parents, their health was not too fine, and my brother. No. Listen. I don't want. मेरे को सिर्फ इतना था last rank. No, last rank I was corporal. But the thing is, I was out here as well in this LSPD, and I was a senior officer. But then I resigned from there. That's why I'm applying for reinstatement now. Okay. What is your name? Jake Williams. Oh yeah, got it. Now got it. यार क्या है ये? रेडियो पे ना हो रहा लगता होगा. All right, so that concludes the interview, I guess. All right, sir. Oh no, my question is yeah. You heard about HUT? HUT? Yeah, HUT. No, sir, I have not heard about that. Okay, ठीक है, छोड़ दो. The question was the difference between a felony and a HUT. So what is an HUT, if I may ask? Yeah, HUT is held until trial. Oh, okay. Okay.
This is the first time I was actually hearing those terms. And if I'm performing, okay, I do not know this answer because I just heard what HUT is. No worries. If you got selected, you will get to know about what is Definitely, HUT sir. and what is a felony. And Felony, I do know, but HUT was the first time I heard. no, I'm not talking about felony stop. A person who's committed a major crime, right? Is called under. Yeah, exactly. Yeah. Alright. HUT is also a major crime, but there is a different thing. Like Different both are protocol. different. Okay. Fair enough. I understand that, sir. Yeah, done exam. I mean, Yeah. you done? Okay, ठीक है तो एक काम कर 70 प्रोवाइड कर दे आंसर को मिला के 9 हो गए तू जाएगा तो 10 हो जाएंगे किधर जाना रेडियो 1 और रेडियो 3 ओके इनको छोड़ दे और मेरे को तू कर देना ठीक है अपडेट हाँ मैंने कर दिया है ओके ठीक है अगर कोई नेक्स्ट आता है इंटरव्यू आई विल टेक डू नॉट नेगोशिएट एंड ट्राई करो सुनो आई विल टेल द प्लान 3 to 4 बैक ऑन हॉर्सेस दिख रहा है भाई रुक जा वो लोग ग्रुप के ठीक ऊपर है ना ग्रुप पे 3 to 4 back on radio 3 what is the active dispatch okay it's 10-4 will be 76 I had a word with Tyler Ryan sir please check the count on the radio 10-4 taking the head count just hold on by the way it's already done now we are done that's your response would be updated there are 11 officers on the radio dispatch yes sir 3 to 4 would be backing off no don't count me in मैं सिर्फ 2 यूनिट को भेजने के लिए 10 ही है 10 है फिर बैक मैं छोड़ रहा हूं alright thank you sir for coming in your response would be updated soon just keep your eyes peeled for the SSP response alright yes sir thank you so much alright have a great day you too it's me sir I would like to एचआर वो देख ले जरा क्या रियल ड्रीम्स का देख ले मैंने डाल दिया है ही इज प्रमोटेड उसका एग्जाम मैं बस उसको भी सेम गुलखान की तरह प्रोबेशन प्रोबेशन गुलखान तो प्रोबेशन पीरियड के बाद इतना दिखा नहीं है आता है लेकिन बहुत कम हाँ बट ठीक है ये आनी चाहिए एक बार हो सके तो मैं एक हफ्ते के बाद मैं एक छोटा सा एक और एसओपी का टेस्ट देख लूंगा ठीक देखते हैं यार कुछ व्हीकल ही हो रहे हैं इधर क्या हो गया can someone pick up me go pick Rana sir और ये स्लेट को लेके दे दे come on the roof क्या देना स्लेट को स्लेट है किधर इंट्रोगेशन सेल्स ओके लिसन सो अगर कोई आता है नेक्स्ट हाँ कोई आता है तो मैं देख लूंगा मैं और स्लेट वो अभी फिलहाल इंटरोगेट कर रहा है तो करने दो ठीक इंटरव्यू वगैरह आता है तो ठीक फर्स्ट लास्ट टाइम यहां से क्लास 2 से यूज हुई थी they don't have a class 2 but 16 मैंने प्लान किया था सुबह एवरेज आउट लेके चलते हैं मैम 16 प्लान्स अब पिछले 4-5 दिन से कंटीन्यूअसली प्लान कर रही हैं 16 प्लांट्स कंटीन्यूअसली से रिसाइकलिंग से एक सीड मिलता है डेली मैम रिसाइकिल की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मेरे को बस ये हाँ, जानना है कि आप प्लान कितने कौन निकाले थे नहीं पहले दिन तो मैंने बस 2 सीड प्लान किए तो एक बात बताइए अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं रोड पे मेरे को कचरे में गन मिली तो आई नो इफ इट्स इलीगल मैं क्यों उठाऊंगा तुम्हारे पास बाद में अंदर वही चीज हो गई ना अभी देखो सर सीन ऐसा था ट्रिगर्ड ग्रुपिंग मेरे को फार्मिंग का बहुत ज्यादा शौक है लेटर मत चढ़ने देना सस्पेक्ट को क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने प्लान डोंट हैव अ हॉस्टेज राइट shoot them down yeah I know we need to go just give me a second I just want to give you something उनको वो सिक्योरिटी गार्ड्स को डाउन करने तो उसके बाद एंगेज कर दो क्या ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स that would be all from my side एंगेज देन तो एक तो सबसे पहले ये चीज है कि आपने जितने भी प्लांट्स ग्रो किए हैं पे कोई नहीं है वो सब आपको देने पड़ेंगे ठीक 10-4 will be there just picking the answer 3 to 4 would be 76 ओके अर्जुन सर मैं बताऊं क्या करना है बस है प्लान यू डिड नॉट एंगेज एयर 1 कितना ऑफिसर थे एयर 1 में
रे मैं बाइक यूनिट पे नहीं आऊंगा, बाइक यूनिट पे नहीं आऊंगा, रिस्क रहेगा। तू है ना, तो दोनों को वो रूफ पे उतारो, ठीक है। लीफ वॉकर विल कीप शूटिंग फ्रॉम देयर, जिस बिल्डिंग पे वो है, ठीक है। मैं और लियो एक और बिल्डिंग पे जा रहे हैं, तीनों तरफ से पिंच करते हैं। I need the officer to pick up and drop. मैं बताऊं, व्हाइट बिल्डिंग पे जाओ, इजी है, खत्म। Getting shot. ऊपर क्यों चढ़ने दिए उनको? एक ही बंदा चढ़ के ट्रिगर करके भाग गया था। ट्रिगर करके भाग ऊपर चढ़ गया एकदम से सिक्योरिटी गार्ड। They use class 2। ऊपर तो चढ़ने दो। अरवन जरा देखो क्लास 2 है क्या किसी के भी हाथ में ऊपर? Then I can't see any class 2s over there. I guess मेरे को क्लास 2 की आवाज आई थी। That might be over the guards. उनके पास class 2 होती है। Rate of currently 76. क्रिस्टोफर मैं एसएमजी निकालने जा रहा हूँ। सुनो, व्हाइट वाली बिल्डिंग पे जो है वो दोनों के दोनों स्टेज के पास लेटे हुए हैं। मंसाला रेड वाली बिल्डिंग है, सबके सब पीछे जनरेटर। एक शूट है, निकल के मार। शूट है। ब्रिंग द एसएमजी फॉर मी। वो ये वाले होटल पे नहीं किया इन्होंने। निकाल लेते। Getting shot behind। हाँ वो कभी-कभी हो जाता है गायब इसी तरह के पीछे मत रहो। और यहाँ से क्या मारे हैं? एसएमजी रुक जाओ सर अभी। Let's plan something out. Recklessly कोई भी पीक मत एक बार पुश करना है, there is no other। पे एसएमजी से आना था, आई थिंक मैंने क्लास 2 की आवाज सुनी। Can you please come? Sir, even I heard the class 2 sound. They have SMG. SMGs guard से लाते हैं या we have to make sure that guards की आरती या फिर चली थी। मैं बोल रहा हूँ कि अरवन तुम कंफर्मेशन करो, अगर है तभी चलाएंगे। Can't see any class 2s on their back. Sir, do you need additions? And we are 10. Check the radio count. Just listen, वो guards की हो सकती है। Right, I'm backing off from the radio as well. जो भी बिल्डिंग्स का ऑप्शन है वो ब्लैक वाली पे जरा शूट कर दो। We can shoot them, वो distract भी हो रहे हैं। कवर में भी लग रही है। There is no use। इरवन तुम यहाँ पिक ड्रॉप करें, नो यूज यहाँ से शूट करना उनको। गन्स की रेंज ही नहीं। वो पीछे चले गए, रेंज है। Coming back to pick you up. Clear the area. जल्दी जा रही हूँ, मसाला ही मसाला। आज क्या कोड रेड होगा? हो गया, हेड दिए हुए बंदे को। विजुअल्स है यहाँ पे तुम चढ़े। We are fighting them। 10 को और मत आना इधर। 10 को
डिस्पैच देखो यहाँ रह के फाइट करना, पुश इन करना है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लान करो, पुश इन करो, सिंपल। कैन यू लैंड ऑन दैट बिल्डिंग? थोड़ा रुको, उनके पहले रिसोर्सेज वेस्ट करवा दो थोड़े बहुत, फिर करते हैं पुश इन। एग्जैक्टली, जस्ट यूज द रिसोर्सेज। आर यू श्योर बैग्स नहीं है उनके पास? हाँ मेरे को लगा पॉज हुआ है कुछ। उसका देख रहा था बस, उसको मस्त टप्पे दे रहा हूँ बैठ के बस। उसको दुनिया जहां का भ्रमण करने दो, उसको खोपड़ी में पड़े जा रही है, पड़े जा रही है। हो रहा नहीं व्यू नहीं है वरना वो देख। लगता है उसको दिख गया, उसको कॉल दिया ना। एंड आई कांट गो फॉर रिफ्यूल। एरवन मेरे को एक बात बताओ, उस बिल्डिंग पे कुछ दिख रहा है तो वो लैंड होने लायक जगह? इस वाले बिल्डिंग को हम लैंड कर सकते हैं। तो वहां से सुनो, वहां दो को व्हाइट वाले बिल्डिंग के हम पुश इन करेंगे, रेड वाले पे बाकी सब पुश करो। उंगली चल रही और कुछ रहा। रेड वाले बिल्डिंग का लैडर है, उसको व्हाइट वाले देख सकते हैं, तो हम जहां व्हाइट वाले देख सकते हैं, बट एयर वन लैंड करेगी ना उधर। एयर को रेड वाले भी मार सकते हैं, एयर को रेड वाले भी मार सकते हैं। So then what is the point? Push in का क्या करना है? Any ideas? Hold for a while. होल्ड कर लो थोड़ा। Big white. Figure something out. Chill, कोई नहीं, अभी चालू है। By the way, कैन माइल्स का कोड 0 हो गया। Pause it then. वेट करो, Hold वरना on, फिर pause. उसको बुला देना। ये जगह में मेरे को बिग वाइट लेने का मन कर रहा है। शूटिंग I had one suggestion, but I would hold till the situation resumes. बिग वाइट पकड़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ आगे बिग वाइट है, बिग वाइट पे ऐसे मिलेगा क्या रेंज? इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ चलो इसका हो गया, मैं अभी ये बंद कर रहा हूँ। ऑपरा 1 कर रहा हूँ, फुल एफपीएस लेंगे 60 के 60 और फिर मारेंगे 60 एफपीएस में मारेंगे भाई। ये क्या है? अच्छा ये रेंडरिंग ऐसी हो रही है, उड़ रहा है। भैया अच्छा कल पर जान मेरे मेरा हो आगा तू अयो कह दे गलत ना। गलत में गलत में तो कह दे गलत में।
रख। अयो Can Miles back? Nah, he'll be back. आ रहा है वो. क्या thing? Imran, thank you so much for the subscription. मसाला तो है। ये जगह मैं ऐसे ऐसे एंगल से मारूंगा। एंगल्स ही एंगल्स, बिंगो के मैड एंगल। अरे भाई 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 भाई, लोकेशन क्यों दे रहा है भाई बंदा? अयो अच्छा, वो तो उधर पहले से ही बैठा था, लोकेशन क्या दे रहा है उसको? पहले 3 टप्पे दे चुका हूँ मैं। 2.9 factory. अरे कह रहे अल्फाज यहाँ। पहाड़ी
हाँ भाई कर क्या रहा है 10 माइल्स? I know one. नहीं मोहन वो देखो ऊपर नाच रहा है। नहीं Bang bang kamae ada trigger. Ui. हाय ये फिर से आया इसका तो 14 दिन हुआ नहीं। Kinmans is back. उसको रेडियो वगैरह पे आने दो। लेट गया। सबसे बेस्ट है भाई ये इमोट मार के बैठ जाओ दुनिया की सबसे बेस्ट चीज। लिया इमोट मारा खत्म बाइंड। वही करके जहर लगती है चीज अरे इमोट मार के लेट जाने का पता भी नहीं चलेगा किसी को। कंटेनर आना सर डाल दो आप अपनी साइड से। Allow the situation to resume. 3 to 4 to dispatch the officers who are there on the building. Are you able to shoot them down? Do you have range? 10-4. I was suggesting, I guess the range would be too high, but there is a huge white building on the backside near the Vespucci. If we can get range, then it's good. Fine. Ryan, बहुत दूर है नहीं आएगा तो। नहीं आएगा. That's what I was wondering. अबे लेटा हुआ पैर दिख रहे हैं। उसके पैर क्लिप हो रहे हैं। अब मारूंगा तो वो गलत हो जाएगा थोड़ी पावर गेमिंग हो जाएगी। हाँ अंदर गया अंदर गया। भागा फिर से कवर में। तो 10 से ज्यादा इनमें दोनों ओके। Hit the white guy. डिस्पैच गोलियां वेस्ट मत करना बाद में मेरे को एक होनी चाहिए रीसप्लाई। अर्थात राइट नहीं लेट गया वो। लेट रहा है बार बार वही कौन रहा है। यार 13 मार के दे रहा है वेस्टफुट। I'm safe. So why are we wasting our ammos? I am able to hit them from here. This building. But the damage is very less. मेरे हिसाब से ना जिस बिल्डिंग पर हमें इधर से भी रेंज नहीं मिल रही है। कोई और आ रहा है रिसप्लाई के लिए? आता मम्मा थोड़ी देर में।
need ammos. I think we should stop wasting ammo and either push either waste the ammos now. अभी hold करो. Plan करते हैं and let's initiate it. Okay. अभी एक plan decide करते हैं साथ में. And do you have something? Wait, Leo. Tony. Tony. I mean, Leo, law enforcement officer. Alright, stop it. That's enough. I had the idea of the white building, but the range is the problem. Otherwise, we could have got him really good. Do you have any high-rise buildings around there, where we could get the range? Anything just getting high ground? Any building with that kind of? We have the high ground, but वो लोग cover में हमारे side से. This side Aryan और राना सर हैं. साले वेस्पूची मेरा ही फोर्ट है. ETA can match. Leo or Tony? One is shot really bad. I hit him like 4 bullets. Okay. कुछ नहीं होता for the. To a trip, Range someone will be was going very for a close. resupply. Does any officer need anything? Give me some ammo. I'm getting. I need some ammo as well. We get ammos and armors. वादुरंट का ब्रिम का अल्ट दो वह कोड 4 हो जाएगा वैसे मैं ब्रिम में नु साला अल्ट था तो मार दिया होता अब तक. For hitting them, but वो लोग cover में हैं. अगर तू वहाँ से मारेगा ना तो इस कवर में आएंगे कि हम मार पाए वहाँ पे, समझ रहे? हाँ मैं मार रहा हूँ. मेरी तरफ से वो लोग कवर में है. पीछे की साइड है तुम्हारी साइड. क्योंकि साउथ साइड है वो लोग. साउथ साइड की तरफ देखो. साउथ साइड की तरफ कवर ले रखा है. डिस्पैच यहाँ से गोली चलाना कोई पॉइंट नहीं है. प्लान सजेशंस प्लीज नाउ. स्टार्ट. रात है. नेक्स्ट मॉर्निंग टू पुश. नेक्स्ट मॉर्निंग. कैसे पुश तो करना है. प्लान. One suggestion. Aryan will be landing on the white building जहाँ पे 2 बंदे हैं. We will focus fire on them. वैसे focus fire होता है. Red building वाले हम पे focus fire करेंगे rather than stairs. White वाले भी हम पे busy होंगे. All the guys on the foot can rush to the red building. And वहाँ पे जो 3 बंदे हैं उनको knock down कर सकते हैं. Actually, I was suggesting the same thing. And you will have no cover there on the other building. अगर हम down भी हो गए. Red building में काफी अच्छा cover है. Any other plans? I'm gonna try to get on the big white and I'll try if I have a range from there. Because you said they are facing towards the south, right? And the big white is right on the south. The thing is, you won't even. नहीं पुशन का प्लान पूछ रहा हूँ. दूर का रेंज का नहीं, क्योंकि रेंज बढ़ने के बाद तुम्हारा बुलेट डैमेज कम हो जाता है. I could provide at least a cover fire. That's what I was saying. Intend on that. Either we push, either we cover firing को मतलब. All right, then we go for a push then. मैं क्या बोल रहा हूँ? Pushing on the white building. हम लोग वहाँ पे hot drop करेंगे. Other units, you have to rush into the red building. Until and unless you get in the cover to the stairs, Aryan will not land. Okay. Dispatch listen. Aryan में एक और ऑफिसर चाहिए. सर वैसे भी उस पे एमो नहीं है तो एटलीस्ट वेट हो जाएगा. वेट हो जाएगा. I need 4 officers including pilot in the Aryan.
एंड वन मोर थिंग डिस्पैच, पुश शुरू होते ही एयर वन लैंड होते ही ऊपर चढ़ना शुरू करो रेड बिल्डिंग पे, ठीक है? दे विल फोकस अस। क्लियर? we got it. किस किस के पास क्लास 2 है? मी 3 to 4। व्हाइट बिल्डिंग के ऊपर मेरे पास क्लास 2 है, मैं से भी डाउन होने वाला हूँ, तो ले लो। तो नहीं, मैं डाउन होने के बाद क्लास 2 से ट्राई करो एक बार मार के बड़ा। Don't 10-10। They don't have class 2, so we won't use class 2. Simple। ऑफिसर रैन नाइट लास्ट टाइम भी उनके पास क्लास 1 ही थे। 4 ऑफिसर शहीद हो गए तो ऊपर घुसते ही। सर वो तब देखेंगे, बट अभी फ्लश करेगा, एक मॉली करेंगे। For now only class 1s, no one is using. Exactly। for now class 1। If they have class 2, then no questions asked। Class 2 open fire, खत्म। आता मोहम्मद। Define 97। Tony, I'm leaving. Is the tower full, Tony? 10-4। If you want, I can get you. I'm alone in the charger। चप्पल का रास्ते में यार। नहीं, खाना खाने बुला रहे थे। चप्पल नहीं है। रेंजर भाई चप्पल नहीं है, खाना खाने बुलाया जा रहा है। अबे साले Supplies are in the tower. देखा एक कोई लाला एयर 1 देखा। में कौन सा ऑफिसर आना चाहते, थोड़ा बताना चाहते हो नाम, या फिर मैं नाम ले लूं? ले ही दोहराना सर। 211 ऑफिसर अर्जुन, आई नीड 1 ऑफिसर इन द एयर 1, नाम दो जल्दी। ले गो। पहुंच ही नहीं रही भैंस की। डिस्पैच नाम एयर 1 में मैंने 10-9 बोल दिया, मैंने नाम लेकर आ रहा है। आ रहा हूँ पिकअप के। Lick. 10-4. Just resupplying myself. Give me 2 minutes. I also need to resupply. If possible, bring some ammo towards me. हाँ, या तो डाउन टू हेडफोन में यूज करता है कंडेंसर का। हेडफोन माइक। Where are you all? कंडेंसर नहीं, बैकअप वाली कंडेंसर नहीं है ब्रो, कंडेंसर माइक नहीं है हम पे। हम हेडफोन माइक वाला लोग हैं। Just bring some extra ammo with you. मैं अपना एमो काउंट कभी 200 के नीचे जाने नहीं देता। यहाँ दिख रहा है लेकिन रेंज नहीं है।
अब पुरानी रेंज होती ना, बिग वाइट से चढ़ के मारता था मैं। रेंजर भाई, अगर ग्लॉक की रेंज पुरानी वाली रहती ना, बिग वाइट से चढ़ के मारता सालों को। इस खुशी में रह रहे कि एका दुक्का टैक्टिक्स तो याद है थोड़े बहुत पुराने। इसका तोड़ निकालना पड़ेगा बैठ के। Late, get in the chopper. साला पेट तुझे फिर काम तुझे। Get in the chopper. हम भी Unit getting ready. Yeah. में कौन ने 3 रे सर सरताज सर मी आई नीड लेक आ रहा है। तो फिर पायलट जो रे आपको भी उतरना पड़ेगा। हो जा बच्चे हट। एक क्लिप देता हुआ देखो डीएम में दे बाटो Once we neutralize those 2 suspects, बाकी ऑफिसर इजी हो जाएगा बाकी भी। Provide cover fire from the white building as well. Red building. So, how many are on which building? Could you please confirm once again? 3 on red, 2 on white. All right. And we are going to neutralize white building. Lake, make it quick. Dawn पे ठीक है dispatch. Wait for the dawn. 10-4. भाई रात में रिस्क नहीं लेना भाई। दिन का ही सही है। मॉर्निंग का वेट करो फिर पुश करेंगे जरा सा। 10-4 वेल। Restored on. मैं ये मॉन्यूमेंट पे चढ़ के मार सकता था, नहीं रेंज नहीं। गेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ मैं देख रहा क्या। Dispatch, is Lake Walker in the air one? We are ready to push. अंदर पे चलेंगे। 3 बज रहे, 3 और घंटे रुको जाओ। 6 PM of the morning. बिल्डिंग के नीचे रेडी रहो, ठीक है? रेड बिल्डिंग के नीचे रेडी रहो तुम लोग। डिस्पैच रात में पुश कर दें? सर कमांड इज 236 कर सकते हैं। सबको सही से दिख रहा है तो कर सकते हैं पुश। I can't see anything. Everything with them. पुलिस तुमको भी दिया है, देख लेना कब ठीक। लेट्स पुश डिस्पैच। सब लैडर के नीचे आओ। In the air one, everyone. Rana sir. Send it. Okay, dispatch. Everyone ready for push. अरे lightning fury You have to make it quick because air one में ज़्यादा fuel नहीं है। What time sir? तो रुक जाओ, हम देख रहे हैं नीचे से चढ़ने के कितने रास्ते हैं। Dispatch, air one in the air. Just give me a call when we are going to drop. पुश करने के लिए रेडी हो? हमको बताओ बस। Do we have a ladder for the push? 10-9. There are 2 ladders. ग्रुपी के सामने ही है दोनों उसकी, ठीक है? दोनों बिल्डिंग की लैडर ग्रुपी के साथ में। All right. Ready. All right, ground officers, कौन सी बिल्डिंग पे वाइट कैप्चर किए? okay, we will go on white one. You have to go on right one. Make it quick. I am on the red one. Fuel red है। 10-4 बाकी सब जो नीचे ग्राउंड पे वो रेडी हो? Ready. नीचे आ जाओ सारे के सारे। Ready. हम आ जाओ साथ में पुश करेंगे, रहने दो। सारे आ जाओ ग्राउंड पे। बिल्डिंग की एग्जैक्ट नहीं।
रायन बोलना। ये रियल अब मेरी कॉल नहीं सुन रही, एक बार तू रेडियो पे बुला के बोल दे, वो कह रही है मैं बिल्डिंग पे ही रह के मारूंगी, यहाँ से कवर दूंगी। एक बार कॉल रियल कम डाउन, वी नीड टू पुश ऑल टुगेदर। Just waiting for you guys. Please make it quick. We are on 3 to 4 डायरेक्ट टू रियल ड्रीम्स। उसको बैठा ले। हाँ साथ में पुश करेंगे तो ऊपर से कवर दोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो वो, क्योंकि वैसे भी वो नीचे ही फोकस फायर करेंगे और वो नीचे ही देखने वाला है, हमारी तरफ देखेंगे नहीं वो। चल रहा है, लेट्स गो। चलो अब लैडर के पास We are approaching to the ladder. We are approaching। रेड बिल्डिंग ठीक है, आप रेड बिल्डिंग के ऊपर जाना। अरे यार we are here. आ रहा है। give a call when to rush. We are ready. आ रहा है। Let's push. Okay, are you ready to push? 10-4. 10-4 we Okay, are we are landing. good। Land fast. Everyone land fast. होल्ड ऑन अंदर की तरफ है। Everyone land. ऊपर चढ़ो। चढ़ यार They have fuel I guess। 2 down। Nice, take hold of the building, they have fuel I guess। अरे चढ़ रहा हूँ, कवर देना। चढ़ रहे हैं, रुको कहना से उतरो एक बंदा उतरो। तुम क्यों उतर? All officers are up। पड़ रही है। पीछे जाओ। चल ऊपर। One down। Two down। All down। Code 4। अकेले 3 के सामने एक मारा मैंने इनकी भाई मैंने 2 मारे। अबे फिर मर गए भाई तुम। मार दिया एक, ट्रेड हुआ हूं मैं। Okay, everyone is returning back to base for the repair and गाली कौन दे रहा था? अरे रुक, गाली Nice one, boys। उसके बाद लेके चल जरा, गाली देना सिखाना है मुझे। अबे ओ क्रिस्टोफर को पहले निकाल। कहां से क्रिस्टोफर को पहले निकाल? नाइस कमांडो। अबे ओ शांत मत कर क्रिस्टोफर मत कर तू। गाली किसने दिया? लाउडे मार। शांत रह। ठीक है ले रहा तीन उसको। Do you need 52 there? 10-4 we do। Okay, dispatch, ऊपर तो डाउन में ना, उनका ऊपर का एविडेंस लो, बाद में नीचे मूव करके एविडेंस ले लो। 10-4 We have 3 suspects in this building. कवर फायर से कोई पॉइंट नहीं था, बोला था मैंने। रियल तुम साले मेरे को बोल रहे हो नीचे क्यों उतर रहे हो? ऊपर में खुल गया था फुल। भाई मैं अबे मेरे को है ना ऊपर है ना ऐसे, मेरे को सोच रहे हो भाई मेरे को धुआं जैसा दिखा, मेरे को लगा आग लगी ऊपर। अबे तुमने गलत कॉल दी, फ्यूल नहीं था वो, ये वाला था वो स्मोक। और लगाओ तुम अच्छे वाले। अबे अच्छे वाले नहीं है मेरे है ही नहीं कुछ। डिफॉल्ट लगाएगा हाँ डिफॉल्ट में दिखा भाई मैं तो ऐसे ही घुस गया, दो बंदों के सामने मैं घुस गया। इसको मैंने मारा भाई मैंने रेड वाले को और इसको दोनों मैंने 2 खाया। वो तुमने कहा क्रिस्टोफर और राना सर ने कितने थे? 5। अब 6 हुए तो कैसे कुछ भी काउंट कर रहे हो? क्रिस्टोफर ने एक ही खाया, क्रिस्टोफर तो बोल रहा है उसने सिर्फ ब्लैक वाला खाया। एक तो मैंने मारा रेड वाला पीछे से। तो फिर मेरा वो एक है, मेरा वाइट वाला मेरा। हटो दूर हटो एविडेंस लेने दो। ले लो, मेरे को जरा उतरने दो यार। एक तो ये सबसे डेंजरस वाला काम लगता है मेरे को, उतरना। चढ़ना मुश्किल नहीं है, मैं गिरेगा। थैंक गॉड। हाँ Forensics pictures are uploaded.
सेकंड देना। हाँ क्या एविडेंस? कोई ना आप आ जाओ, मैं लेके आता हूँ इसको। मैं लेके आता हूँ। Sartaj, leave him there. I'm getting the evidences. व्हाइट बिल्डिंग वाले आ गए क्या सारे? White building is still up. You're getting. Who are the 5 officers starting to process? I need the names. एक सेकंड। 283, one suspect. You gotta take evidence of this. Yeah, I took the evidence of the cars, all the cars, all 3 of them. That's why I took the evidence of all 3 cars and Dispatch, uploaded. good work everybody, good coordination. Everyone baited me again. I really appreciate that. Are you good? Command, Mr. Arjun, really appreciate it. अबे साले। No commands were given from your side. Not on radio. Not on radio. अबे पर्सनल जितना बोलना बोल बे, रेडियो पे। फैमिली रेडियो नहीं एग्जिस्ट अबे अभी क्योंकि ये वाला वो नहीं है Not on radio, officer. नहीं, ये भी ऑफिशियल रेडियो ही है। अबे सुन रायन। हाँ। मैं अकेला क्यों था इस बिल्डिंग पे? आई वुड लाइक कूल बनना होता है क्या तुमको? क्या पता, हम पीछे भी थे। अरे पता है ऊपर में चढ़ा ना, ऊपर मेरे को धुआं जैसा लगा, हल्का सा आग जैसा। मैं बोला मैंने कोई आग लगाई थी, मैं ही वाइट वाले किधर है? वाइट वाला जला है ना, आग थी ना। मैंने तभी बोला ऑफिसर को कि रुक जाओ, आग जल रही है। हाँ अबे वो कौन बोल रहा था आग नहीं ऊपर? जरा बोलिए ऊपर आग थी, इससे पूछिए जला है। मैं बोला ना आग है, थोड़ी मारा इन्होंने। मैंने बोला ना आग है, मैं तभी बोला रुक जाओ आग है। फिर चलो। नहीं मैं छीन लेगा, वो बोलता है टोनी नीचे क्यों आ रहा है? तो क्या मर जाऊंगा? यार पहले तो मैं बॉडी कैम ऑफ करो, मेरे को गाली किसने दी थी उस बंदे से मिलाऊंगा। अरे चुप हो जा मत। अरे ओ शांत रह। ओके एक मिनट कमांडिंग ऑफिसर भाई एक बात बता, कमांडिंग ऑफिसर मैंने सजेशन हड्डी तोड़ दी मेरी। नहीं लिया, बट सेम सजेशन रे का ले लिया। किधर है कमांडिंग ऑफिसर? ले लो ये रहा कमांडिंग ऑफिसर के ले लो, एक साइड में। लीव द एरिया, लीव द एरिया। 3 2 कौन बज रहा है? 1 क्या बोल रहे हो तुम? हेलो ऑफिसर, लीव। रिस्टोर इस ऑफिसर को, क्या बोल रही है? अबे वो धक्का दे। टैकल करना एक सेकंड मेरे को जरा टैकल करो, टैकल कर। ड्रीम्स टैकल। हम भी लेते हैं, हमने भी ऐड करा है, खुद उठाएंगे हम खुद ही। सुन, थैंक यू। नीडेड ट्रैक। कैन जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओए कैन, ये बस्ती चेक कर भाई तू। क्या भरा हुआ है? भैंस की यार 7 आर्मर है इसके पास। बस्ती के अंदर 7 भैया बस्ते वाला सिस्टम फिर हमको भी यूज करना चाहिए। सही है भाई। हेलो सर राणा सर, फिर बैग लोड करवाओ बैग पे आर्मर ले आते हैं ये। पीडी बैग का कुछ जुगाड़ करवाओ। क्या फायदा, यूज करने मौका भी पीडी नहीं दिए। अब अलग बात है। रुको मैं जरा जाता हूँ, समझ रहा हूँ मेरे को पड़ रही है। बोल रहा था इनका, इधर आओ। राणा भाई बात सुन, मैं जरा 1 मिनट जरा जाता हूँ, मेरे को थोड़ी पड़ रही है जरा। को लेना है क्या है ना, अभी अल्टीमेटम आ गया है। सुनो अल्टीमेटम आया है। या तो खाना खाओ या तो चप्पल। मेरे को खाना खाना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है बोलो राणा सर बोलो। एक बात बताओ, ड्रीम्स को और ऑफिसर के साथ चल जाओ। मैं थोड़ा टाइम दिमाग में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 3 to 4 would be 10-7 for a few minutes. रायन आरामजादे किडनैप करके ले गए, मेरे को बैकअप भी नहीं दिया। अबे पहले तू बैठा जाके उनकी गाड़ी में। Hi. There is a Evo here as well. Dispatch, I see a Evo here. अबे साले में AFK होने को इधर Evo मिली। किसकी है भैया? Dispatch, could you please check who were involved in the situation? The suspects? One of them name is Jerry. Was Khekara Chagan involved? Because there is an Evo parked in the alley just beside the building. Hi, 97. Yeah.
Could you please provide me the names of the suspects involved? So इनकी है किसी की मना करे. All right. No worries, then I'll let it be. Ima. भाई आया मैं जरा खाना खा के. Boys, just give me a moment. Can I have the names of the officers who are processing the suspects? Tony. Okay, one. Second, who is that? I'll handle one. Lake Walker. Okay, three. One me and Arjun will do. हाँ सर आप कर दो. नहीं दोनों मिलके one and me अर्जुन क्यों? And what about the commanding officer? I can do one. तो एक वो कर देंगे. एक मैं कर लूँगा, एक केन, एक क्रिस्टोफर. Dispatch, who is using that horn? कार लेकर जा रहा हूँ, तब तक आप ले आओ इस पे. Okay, can one Arjun one? 239 with the GT. राणा सर सुनो मैं बताता हूँ. एक मैं, एक केन, एक ऑफिस, एक मैं, एक केन, एक टोनी, एक क्रिस्टोफर, एंड आखिरी जो बचा एक लेक वॉकर. I will be in the cells until the suspects are processed. एंड हम व्हीकल्स लेके आ रहे हैं जो यूज हो रही थी. स्ट्राइक्स नहीं है, लेके जाने की जरूरत नहीं है. गाड़ी का नंबर देखो, स्ट्राइक मारो, इंपाउंड कर दो. सिंपल. गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है. 10-4. डिस्पैच गाड़ी के ऊपर अगर स्ट्राइक्स पहले से नहीं है चेक करो. स्ट्राइक पॉइंट्स डालो और इंपाउंड कर दो इधर. +1 will be 76 to 16. In traffic. एक बार एयर 1 में काउंट कर लेना कितना सस्पेक्ट्स है. अरे सस्पेक्ट चॉपर में जा रहे हैं. जस्ट एक ऑफिसर उनके साथ चल जाओ. Me and Tony are there at the pillbox. Dispatch, wait, I want. Dispatch, all the 5 suspects are moved to pillbox. Seems like they are in the Air 1. EMS chopper. There are 3 in the EMS choppers. 10-4. Me and Sartaj are coming in a vehicle. Impounding all the vehicles then. Do we have other 2 suspects with us?
37 76 260. डिस्पैच कैश सबको सीज कर दो सभी का. Any officer down? Just where are the other two suspects? Just be advised, we have 4 suspects in the EMS chopper. Wait, Christopher, I have one in the pillbox. 10 for both the 5 suspects. Okay, I need 3 officers on the pillbox terrace, please, so that everyone can be moved at a time. Again, Christopher will be 76. Yes, I am awake. उल्मा ये क्या है क्लिप? जा जन्नत दिखा क्या उधर जा 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 जन्नत उसको दिखा जा 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 जन्नत जा तू इधर जन्नत दिखाती मैं जन्नत. हाँ 3 to 4 back 10 it. Three to 4 back 10-8 76 to 19. That's 597. अब आवाज नहीं आ रही क्या? Yeah, one and Lake have one. 3 to 4 back 10 dispatch. एक Christopher के पास. We have 5 suspects. Do you want me to make the report? 10-4. Just give me the names. I'll be preparing the report till you bring them into the custody. Give us 5 minutes. 10-4.
अर्जुन कपूर सरताज रे अनलीक। मैं चटा एविडेंस चिपकाना चालू कर देता हूँ। Dispatch, could you please provide me the name of the suspects? ट्रीटमेंट नहीं हुए सबके, तो थोड़ा रुक जाओ। रहा है ट्रीटमेंट All right. बंटी है सर। Bunty, which one? बकचोद। All right. And second? Diaz Cortez. All right. बाकी 3 का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट होते ही नाम बता देंगे। One of them is Jerry. And 9? Jerry, the green hair guy. And 4. Yes, M45 one, thermite, white joint, purple joint, switchblade, lock है। एक सेकंड। आर्यन 36 ऑफिसर आर्यन। Go ahead. इनका नाम है कैस्पर मिगेल। Casper Miguel, all right. MIGUEL.
ओके अबे मुझे पोजीशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस लगेगा। Setting a riot for his attempt. One of the suspicious Denzel Black. Denzel. यार नाम लिख लिया तुमने? Got it. 5 हो गए ना? 4 हुए। 4 हुए। I need full name of Jerry. I need the full name of Jerry as well as upload the pocket evidences of all of them, please. Oh my bad, ये बंद There is no Jerry here, Ryan. Gibson was saying na. What's the name of the Diaz Cortez. I was confused. All right. So there are 4 suspects: Diaz Cortez, Bakshud Vanti, Casper Miguel, and Kekada Chegan. Oh, Kekada Chegan is a new one. Wait a second, I asked, there was a Evo parked right next to the building. It belonged to Kekda Chagan. I asked that time that somebody told me on dispatch that Kekda Chagan was not there in the situation. Oh well. He's there. Chagan, रुको। Murder of a government employee, first degree robbery, second degree robbery, my bad. robbery नहीं काम कर रहा है ये। Violating a court order, trespassing, arson, antitrust poaching. Back to Ryzen. बस सारे सस्पेक्ट्स एक साथ मूव करो, समझ रहे? All 5 suspects are accounted for. 10-4. Okay, where are the other 3 suspects? 3 suspects. Okay, 2 more. 3-4 plus 1, 76 to 19 plus 2 15s. Dispatch, where are the other 2 suspects? Ground floor. 801 plus 176 to 19. 239 traffic. भाई जी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। हमारे साथ ही हो ना तुम? अरे ये कौन है? शरीफ सर, ये शरीफ है क्या? अरे तुम आ जाओ। अरे ये अभी भी साथ में ही है मेरे साथ। साथ में चाह रहे हैं जी। 012 ऑफिसर शाकी। भाई ये क्या खुल क्यों नहीं रहा? चलो अंदर जाओ, इधर आ जाओ, राइट वाले अलग अलग सेल्स में घुस जाओ। हाँ अलग अलग।
इसमें आओ, इसमें आओ। 01 switching back to radio. दियास कोटेस कहाँ है? 4 पर्पल जॉइंट और एक M4 ये सब चीजें ले ली हम। थैंक यू। टाइम पे कौन आया? आओ दोबारा मग शॉट ऑफ अरे बाहर मेरे को एक और 100 तो और ये डेमन, डोंट टेल मी दिस इज डेमन। आर्मरी लेके डेमन बगल वाला। मैं अरे इसके साथ जो इसको वो कर रहा है इसका सामान ये कॉन्फिस्केट डेमन है। मैं इसको देख रहा था। हमें डेंजल भाई की क्या पहचान, क्या हाल है? पहले बोल रहा हूँ हमारे पास टेररिस्ट डेंजल भी भाई है, एक ठीक बात है इधर। बताओ, ये जो बंदा दिमाग में गया इसका और क्या भाई हाल करोगे गिब्सन जेल में जाके? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। चल आज हो गया। फ्री को यार कोडिंग पे चलती है साइफर पहले बोल रहा हूँ यार, इसको ये कमांडिंग ऑफिसर इससे बात मत कर। अगर तू बात करना शुरू करेगा ना, कमांडिंग बंदे बट कमांड सब दे रहे थे। टॉय होता है वो वाला है। इसको जो की लगता है तुम्हारा रहेगा ना, ये बोलते जाता बंदी नहीं तो दिक्कत नहीं है ना। भाई स्कैम हो गया, भयंकर वाला स्कैम हो गया था, माफ करना जरा। अगर कोई ऐसा रिपोर्ट बस सेव हुई हो यार, आई जस्ट होप। डिफेंड कैप्टन ऑफिस, वरना लग जाएंगे। प्रोसेस करो जल्दी। लग गए लौड़े तेरे। कैनवाइजर बना रहा है, जल्दी एमडीडी कर रहे हैं। प्रोसेस करो, भेजो। इस तुम्हारे बाद मैं अरे चार्जेस के साथ सब रेडी था मेरे पे, रुको। डालना चाहिए था। सेव नहीं हुआ क्या? नंबर थोड़ी होगा तुम्हारे पास। कोई नहीं। सेव किया था मैंने, बट सेव होते ही फटा। नहीं है बस नहीं कहता सर, गाड़ी कहाँ मिलेगी अपनी? कोई ना, मैं चार्जेस बता रहा हूँ सबके। गाड़ी में सुन लो, स्ट्राइक लगी है तुम्हारी सबकी। सुन लो, रुको मैं 1 सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए हाँ कितने स्ट्राइक पॉइंट ऐड करने हैं। रुको, ओनर पकड़ा है ना, पहली बार ओनर पकड़ा तो सीधा 10 लगाओ 3 दिन के लिए अंदर। ओनर पकड़ा तो सीधा 10 और 10 दिन कितने कितने अंदर कितने अंदर है? फर्स्ट है तो 3 दिन, सेकंड है तो अगर सेकंड टाइम हो रही है तो फिर 7 दिन, तीसरा टाइम हो रहा था 15 दिन। इधर तमीज से बात करिए तो पहले। पुलिस वाले ने मेरा बैग ले लिया। अबे चार्ज तो लगा दे। गाड़ी तो इंपाउंड करवा दिया है। मुझे मेरा बैग चाहिए ऑफिसर। हैं? सूती हो ना। राणा सर की कमांड है भाई। अरे तो वो निकाल के दे दो ना यार, बैग तो दे दो। 10,000 का लिया था हमने। क्या एक बार मेरे को एमडीडी नंबर बता दे। मेरे को भी बता दो यार। गाड़ी एमडीडी नंबर बता दो यार। बैग चाहिए, बैग। कोई नहीं, उस पे ऊपर डाल दो, उनको बोल दो 3 दिन तक नहीं बैग चाहिए, निकलनी बैग बैग। चलो सिंपल। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। वाह भाई, मैं इसका बैग दे दूंगा, लेकिन पहले सब मेरी जेब में जगह नहीं है, इसका जेब बैग का सामान डालूंगा ना शायद। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ तो दे दो हमें, सामान समेत दे दो हमें, हमें खुशी होगी दिल से। वहाँ छोड़ो उसके पास मेरे को। बाय द वे माय सेल्फ डेंजल ब्लैक, आई एम फ्रॉम अफ्रीका। हाँ, इसके ऊपर ना इंपेरिटेशन का चार्ज भी लगा दो। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम डेंजल ब्लैक हो ना? हाँ डेंजल तो है, हम दिल से डेंजल है। देखो ऐसे मत करो, हमें हमारा बैग दे दो, हमें दिल से खुशी हो जाएगी। राणा सर 2 मिनट है। शेरिफ। हाँ सुनो 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 सुनो, एक सेकंड सब पैसे जॉइंट्स मिला ना? मेरे पैसे नहीं होंगे, मैं जॉइंट लेता ही नहीं, मैं सिर्फ आर्मर पहनता हूं। आर्मर सुनो, केकड़ा छोड़ के ना बस। मेरे पास भी नहीं थे जॉइंट। हेलो हेलो, मेरे पास सुनो सुनो, अरे सुनो, तुमको 5 चार्जेस बैठते हैं बंटी। बोलो। Misdemeanor possession of controlled substance, attempted murder of a government employee, criminal possession of firearm class 1, criminal use of a firearm and second degree robbery। मेरे को अगर बैग मिल जाता तो मेरे को बहुत खुशी मिलती। अरे रुकेगा? रुक जा यार बंटी, तेरे को समझ नहीं आ रहा। तेरे को बोल रहा हूँ भाई। डेमन, इट्स अ लास्ट वार्निंग, अगर नहीं रुकेगा ना एक वर्ड पे 1 चार्ज लगाऊंगा। सिंपल।
बंडी तुम्हारे होता 5 चार्जेस मिसडिमिनर लगाओ चार्जेस इसको। लगा जरा डिसोबेइंग लॉफुल कमांड लगा। देखो मैं तो ओबे कर रहा हूँ, देखो पूरा ओबे कर रहा हूँ। ये देखो मेरे को बाहर आ गए। अब बैग दे दो यार, बहुत खुशी हुई कि बैग सर मत करो यार। हाँ आप सुनो। हाँ सबका फाइन एंड जेल बता मेरे को। बता रहा हूँ, रुको जा पहले चार्जेस बता लेके दो। जाओ बोला मैंने, लेके जाओ। सुनो मेरी बात सुनो रायन। हाँ 5 डिग्री रॉबरी, क्रिमिनल पोजीशन ऑफ फायरआर्म क्लास 1, अटेम्प्टेड मर्डर और सुनेगा मेरे पे 5 चार्ज लगता है एक्चुअली, चार नहीं। 5 और बताओ। मिसडिमिनर पोजेशन ऑफ अ कंट्रोल सब्सटेंस, अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्रिमिनल पोजेशन ऑफ फायरआर्म क्लास 1, क्रिमिनल यूज ऑफ अ फायरआर्म एंड सेकंड डिग्री रॉबरी। यूज भी लगाना है। फर्स्ट डिग्री होती है। आती है ये फर्स्ट डिग्री वाला है। ओके सब फर्स्ट डिग्री वाला है। जिमी सर ने भी सॉरी यही है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी माय बैड, मैं भूल गया था यही है। लगाना है नहीं लगाना है। इनका होता है 13,750 और 150 महीने की जेल। क्रिमिनल यूज लगाया तो फायरआर्म क्लास दोनों में से एक ही लगा। अरे किसका उस पे डालना है 1482 राइट? किनमें ने जो सेव किया कितना फाइन हुआ ये बताओ। अबे अब रायन ने भी बना दी एक। मैं बनाया केन डिलीट मार दे तू। सुनो ना। हाँ 13,750 13,550 750 हट जाओ मैं देखो कोऑपरेट करते हैं सर, थोड़ा आप झुको थोड़ा हम झुकते हैं। जेल में बेटा झुक ही रहना। जेल 150 महीना। क्या बोल रहे हैं सर? मुझसे पेपर क्या बोला आपने? 150 महीने की जेल है। ना इससे पहले क्या बोला? क्या बोला आपने? फाइन बताओ कितने? फाइन 13,750। बंटी पेपर बताओ। क्या शांत हो जाओ, लेक शांत। एक सेकंड सर देखो हम बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया, मैंने क्या बोला? नहीं जेल में जो झुकते रहना और ये सब क्या सर, ये क्या लैंग्वेज है? मतलब पुलिस हो या गुंडे हो सर आप यहाँ पे? 4-1 सर एक तो गिल्टी प्लीड भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हो सर। तो एक टैबलेट पड़ा हुआ है। राइट में आ जाओ उधर। वो नाम क्या है सर आपका ऑफिसर, आप बताओगे? 4-1 जॉब एमडीटी और विनाश कैसे हो तुम? यार मैंने कब बोला झुकते रहना, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मेरे कान नहीं बज रहे सर, हर चीज क्या मेरे पास। मैंने कुछ बोला ही नहीं कसम से। नहीं बोला ऑफिसर के माइल्स बोला था ही नहीं बोला था। बैग पहना हुआ था उसके अंदर 16,000। जेल कितना करना है इनको? टीटी में अरे इन्होंने जेल क्या निकाल लिया? जेल है 150 महीना। जाओगे कि इससे पहले? अबे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। दे दो ना हमारा बैग, दे दो ना बैग, दे दो। मिल जाएगा भाई। रायन सर ये बताओ इनका फाइन 13750। सुनो हाँ 13750। हाँ ये बकचोद बंटी में भी था। बंटी में था। इसका भी चार्ज लगाना और फिर बताओ। जेल बताओ मैं कर जाने दे वो इतना भी मत जान दो उसका। जाने दो, हमें भी जाने दो। एक बार आईडी नंबर बताइयो। किसका? अभी करता हूं इसका इंसिडेंट का। इंसिडेंट 1481। सर मैं ये कह रहा था थोड़ा तो यार कम करो यार, ऐसे कैसे चलेगा? फाइन नहीं होगा, जेल 150 है। मैं 150 है, घटा के 90 मार दे। 50 ज्यादा कम नहीं हो गया? 50 कर दो यार। 50 कर दो। अब तो लड़कों ने गिनती। अरे वहाँ काम करोगे तो तुम्हारा अपने आप वो 100 कर दो। अरे चलो यार पापा सुनो बचा कौन और कौन ऑफिसर था अपना? पता नहीं, हमने हमारा कर दिया। ये पता नहीं। एमडीटी नंबर बता। एमडीटी नंबर 1481। मैं कर रहा हूँ फिलहाल, रुक जा। सुन रायन बोल। इसका फाइन कर दिया मैंने। जेल टाइम रिकमेंडेड 90। दे दो जिससे खुशी होगी दे दो यार। देखो बाकियों ने कितना दिया उसके हिसाब आर्मर ले लिया, आर्मर वापस कर दो। पिस्टल बाकी भी 5 चार्जेस, इस पे 4 चार्ज थे। ठीक है, इस पे इस पे क्या देखो यार जॉइन नहीं है। हां तो कितना है? मैंने फाइन कर दिया 7850। दिया क्या बैग मेरे को? हां रुको देखो क्या 7850 फाइन कितने सारे आर्मर है हमारे पास। क्या बोल रहा?
7850 ओहो, fine है, my वो God, कर दिया मैंने। 7850, 90 months I plead guilty, please reduce my charges, I want to go। हाँ बोल ना। 90 का कितना करना है हाँ बता। इसका कर दे, फिर मैं समझा देता हूँ अपने वाले को। तूने इसको कितना फाइन किया जरा बताइए लिख। 7850। Why किसी को 7850? मैक एंड चीज खानी है क्या? किसी को बोबा टी चेक कर पीनी ले है यार क्या? एमबीडी में। अरे एक सेकंड, आवाज अपना आ रहा प्राइस है? दियो वापस। दे रहे ये हैं, देख, 4 चार्जेस दे इस रहे पे। जो हमने सामान murder of लिया a था वो हम government वापस employee, बैंक में criminal डाल use of देते हैं। firearm, criminal possession of firearm class 1, first degree। एक सेकंड, फर्स्ट डिग्री रॉबरी, क्रिमिनल पोजेशन ऑफ फायरआर्म क्लास 1, क्रिमिनल यूज ऑफ फायरआर्म एंड अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये 4 कितना बड़ा चार्जेस है? है। कितना बड़ा है? 12250। What? हाँ मैंने मिस किया फिर कुछ तो। Wait, I'll calculate। एंड सुन, बोल ना। कैस्पर का मैं तेरे को सामान बता रहा हूँ। 4 वाइट जॉइंट। 4400। रोक जल्दी लिख, वाइट जॉइंट 4 एंड एक वो। ओए, वाइट जॉइंट कुछ ना कुछ पड़ा था, हमें याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, पहले भाई मेरे को सबके चार्जेस डाल लेने, फिर मैं करता हूँ। अब हम जाए। क्रिमिनल पोजेशन, क्रिमिनल यूज। यार स्कूल जाना था यार, जेल में स्कूल जाना था हमें। ये देखो हमने बैग पहना हुआ है, इसके अंदर कॉपी किताब है। बता दिया चार्जेस से, मार फाइन इसको। चलिए स्कूल जाना है, जाए हम स्कूल। ओए बंटी को कितना महीना किया तूने? स्कूल जाना, देखो हमने बैग पहना हुआ है। कितना महीना किया ये तो बताओ। अर्जुन देखो हम पे प्रो शार्क नहीं था, बस थर्मल। अरे ओ अर्जुन, प्रो शार्क था ही नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? कितने महीने की जेल की उसको? 100 ना ठीक डाल रहा। अरे सब 100 गए, सब 100 ना ठीक। 750 फाइन है सबका। इसका भी 90 मार दे। इसका 90 मार दे। 90 कर दे, 90 कर दे। Just 10 months, please reduce more। 150 होता है 70 ब्रदर, please, do it 150 7। होता है, 150 टोटल। It was 90। It was 90 कर दे। 90 रिड्यूस हो गया वो टोटल 150। No, I didn't have इसका नहीं, any इसका इसके joints or पास shit। जॉइंट नहीं थे, तभी 90 कर रहा हूँ। 80 कर दे भाई इसको। ठीक है 80 कर दे। 70। मर गया क्या? अब तुम यहाँ के क्या वो नेगोशिएशन कर रहे हो साले? 80 मारो इसको। अबे इसका क्या चल रहा है भाई? इसको 150 मार साला पूरी की पूरी। कृष्णवर एक इसको तो सच्ची बात सारी बताइए मारेंगे। मुझे। अगर ये खड़ा नहीं हुआ अगले 3 सेकंड में तो इसको वो ठीक है, तू जानबूझ के डाउन हुआ था ताकि इसको चार्जेस लग जाए, है ना? डेंजल का क्या? डेंजल का इस पे पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा प्रो शार्क मिला है। अरे प्रो शार्क जान दे, वो सब पे मिला वैसे तो, उसका नहीं कुछ। एमडीटी नंबर बता मेरे को। ठीक है रुक कर जा, दे फिर, इसका सबका सेम ही है। रुक जा, कर रहा हूँ 1 सेकंड है। इसका भी उतना ही होगा। इस पे जॉइंट्स मिले? हाँ जॉइंट्स मिले थे। तो इसका भी वही होगा 13,750 एंड 100 मंथ्स ऑफ जेल। आजा भाई। अरे हम स्कूल जाने के 13,750। तेरा पहले बता प्लीड गिल्टी है कि नहीं? फर्क क्या होता है दोनों से? अरे रैंसर सेफ जेल कम होगी मेरी? जेल कम होगी नहीं करेगा तो फाइन भी होगा कम? नहीं फाइन कम नहीं होगा दोनों में से किसी में। अच्छा जेल कितनी कम होगी? 1841 है। इसका नाम डेमन है। क्या झाग रहे हो? वो है डेंजल है, इसका नाम डेमन है। डेमन ठीक है, डेंजल नहीं है, डेमन। डेमन है, डेंजल डिसाइड कर लो। डेमन फ्रॉस्ट। अबे तो क्या? अबे यार इंपर्सनेशन पे कब से कर रहे हो? इंपर्सनेशन लगाओ इस पे। डेंजल लास्ट नेम ब्लैक। इंपर्सनेशन लगा दे इस पे, लगा दे। अरे नहीं देखो हम किडिंग कर रहे हैं, हम किडिंग कर रहे हैं, मत करो। इंपर्सनेशन किधर गया? मजाक कर रहे हैं लाल बाल। नहीं एक बार लगा है इसका बहुत है। इंपर्सनेशन 15 महीने और 1000 तेरा बढ़ेगा। बोल लगाओ। नहीं ड्रामेबाजी बंद कर। क्या नाम है बता फिर। मेरा नाम पता तो है, फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ फिर क्यों जल्दी कर, इसको और नहीं जा रहा हूं फिर से भाई क्यों ऐसा क्या हो गया? नाम बताओ, नाम बताओ। हमारा देखो, हमारा नाम है डेंजल। नहीं डेंजल नहीं, वो इस पे लगा, डेमन इस पे लगा, इस पे लगा। इस पे लग रहा है। चल ठीक है, हो गया मेरा हो गया। लगा, मैं बोल रहा हूँ चलो लगा रहा हूँ। इम्पर्सनेटिंग का लगता है तुम्हारा होता है 14,750 यार। वो डेंजल डेमन सेम ही है ना। और इसका होता है 165 मंथ। मुंह से निकल गया। प्लीड गिल्टी है कि नहीं? हूं मैं, और जेल कर दो मेरी 100 महीने। इसको 110 दियो बाय द वे। क्यों कर दे? तुम्हारे चाचा की शादी है। कर दो यार। इसको 130 मार दो। प्लीड गिल्टी करा है ब्रो। कम ऑन मैन, आई एम फ्रॉम सब साइड। हां बोल बोल। अरे भाई यार, ले साउथ साइड माफिया। क्रिस्टोफर इसको कर भाई, तू जेल फाइन जल्दी। देखो हमें अपने चार्जेस जानने हैं क्रिस्टोफर। अरे रायन इसको चार्जेस बता दे एक बार शाउट करके। कोर्ट में जान देना भाई यार। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा पास हो। ले भाई आ गया चार्जेस बताओ। हाँ। तुम्हारे चार्जेस 1 सेकंड कहाँ गया? डेंजल। हाँ डेंजल देखो 50% तुम्हारे ऑफ कर दो वो। सुनाओ।
तुम्हारे मिसडिमिनर पोजेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस, अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ क्रिमिनल ये यूज ऑफ अ मानता हूँ। फायरआर्म। पहले वाला चार्ज हमें समझाओ, वो हमें समझ नहीं आया। सेकंड वाला तो मैं मिसडिमिनर पोजेशन ऑफ कबूल कर। कंट्रोल सब्सटेंस मतलब तुम पे जॉइंट थे। जॉइंट थे, पर जॉइंट तो हम पे थे ही नहीं। हम पे, मैं बताता हूँ देखो, हकीकत बता रहा हूँ, बैग के अंदर थर्माइट था, जेब के अंदर आर्मर था, क्रिस्टोफर इधर आओ, और क्रिस्टोफर पिस्टल इधर एमो आओ। थी, और एक M4 थी, और साथ में एक सुट्टा होगा मैक्स टू मैक्स, और बाकी एक बैग था। छुट्टी नहीं, बैग के अंदर छुट्टा नहीं था, जॉइंट था, इसी है। सुट्टा कंटिन्यूइंग था ऑन, यार। ये देखो डब्बा दिखा दूंगा यार मैं। कंटिन्यूइंग अच्छा, ऑन, ठीक है कंटिन्यूइंग ऑन। ठीक है। सेकंड के मिसडिमिनर बाद, सेकंड चार्ज के बाद थर्ड वाला बताओ। थर्ड, क्रिमिनल यूज ऑफ अ फायरआर्म जो ठाई ठाई किए ठीक है तुमने ऊपर। ठीक है ठीक है। फिर आगे आगे। क्रिमिनल पोजेशन ऑफ फायरआर्म जो तुम पे हाँ, था, पोसेस भी किया था। हाँ ठीक है। और फर्स्ट डिग्री रॉबरी जो तुमने रुको मारा। बोलने दो इन्हें। और फिर फर्स्ट डिग्री रॉबरी, फर्स्ट डिग्री रॉबरी। अच्छा वो जो वैसे सुनो, ट्रक मारा। पोसेस तो हम शारिंगन भी करते हैं, पता है तुम्हें? और तुम्हें इम्पर्सनेटिंग का भी लगा ऊपर से मैंने। क्यों क्यों? मैंने तो बोला ना, मैं क्यों? डीमन हूँ, डीमन। हाँ डीमन, डीमन ठीक है, डीमन है ना, हाँ, तो ठीक है, डीमन। इम्पर्सनेटिंग का खा। हाँ। क्यों? मैंने सच बोला तो है। अबे 1 मिनट रुक। देखो हम दिल के सच्चे हैं, मन के अच्छे हैं। चुप हो जाओ, अब सुनो मेरी बात। सुनो। तुम पे बस जॉइंट का चार्ज लग रहा है, बाकी सारे चार्ज लग रहे हैं तुमको। लग सुनो, रहा है गलत है, कोर्ट इम्पर्सनेटिंग में का हटा अपील दो। करो। देखो हमने कोर्ट सच में बताया, अपील देखो करो, ये कोई कोर्ट बात में नहीं अपील होती। करो, कोर्ट में अपील इम्पर्सनेटिंग का हटा दो। देखो टोपी एक वाले मिनट हटेगा, प्लीड गिल्टी हाँ या ना इतना बता प्लीड बस गिल्टी। मुझे। हाँ, और देखो ठीक है, वो क्या कहते हैं, बस कितने का फाइन खत्म। है? फाइन बताओ। फाइन और वो बताओ पहले हमें, उसके बाद हम बताएंगे प्लीड गिल्टी है या नहीं है। वो तुमने बोल दिया, अब कुछ नहीं होगा। इसका है 14,750। अच्छा 14,750 फाइन है। काटो और क्रिस्टोफर। वो 110 700 हटा महीने के और 50 हटा के तुम सिर्फ 14,000 कर दो, एक काम करो। और इसका अबे चल बे, 14,750 फाइन काट दिया। होलसेल में खरीद रहा है। और 14,000 सिर्फ 500 काटा है। सेंटेंस, इसका सेंटेंस 165 मंथ्स था, इतना मत 110 करो। है। 130 ये देखो 110 130 नहीं, 110 देखो 10 महीने और 110 10 कर दो, 10 ओए कर दो 130 यार। नहीं, 130 नहीं, 110 10 कम कर दो 110 यार। जेल कर रहा हूँ, 10 चल कम, तेरी प्रेजेंट बस आ फिर गई 10 कम कर दो यार, 10 कम कर दो यार, 10 कम। नहीं, मुझे इतना दिमाग खा रहा है उसको, तुम 110 क्यों कर रहे हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। क्योंकि उसका है ना इम्पर्सनेशन का भी 15 महीना ही ऐड होता है सिर्फ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन प्रशांत। डेमन नाम है इसका, मास्टर कार्ड दी डेमन फ्रॉस्ट। अब भाई डेंजल ब्लैक उधर आया, इधर डेमन फ्रॉस्ट। अब पता नहीं ब्रो, इन आरपी का सीन है वो आरपी का, आरपी में देख लेंगे क्या है। क्योंकि इसका रिकॉर्ड है ऑलरेडी हमारे पास, फिंगरप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स में मैच हो रहा है, सिंपल सी बात। पापा ईयरफोन क्या हो गया? बाद में आता हूँ। भाई ये क्यों नहीं ऐड हुआ?
वो एनआरपी चीज़ है, वो देख लेंगे। मग शॉट सेक्शन। अब वो एनआरपी चीज़ है, वो देख लेंगे क्या है उसका।
Message. Message. EMS is 23 at the scene. So आपको कुछ पता है पीडी के एसओपी के बारे में क्या होती है एसओपी? Dispatch. Okay. Let's be serious. Start. Go ahead with the ET sequence and everything, please. एसओपी की मेरे को फुल फॉर्म बताइए, शुरू से बताइए, पूरा स्ट्रक्चर समझाइए थोड़ा, जितना आपको पता है। फुल फॉर्म क्या होती है एसओपी की? I don't think so. We need discharger. मैंने ये केन माइल्स और अर्जुन कपूर को बोला था ना, उसके लिए पूछने के लिए पर्सनालिटी बेस्ड। शांत क्यों हो दोनों? चलिए कंटिन्यू पूछ रहे हैं ना इसलिए। कोई नहीं, ये वो सिचुएशन पूछने। Mustang is All gonna. units to get inside their vehicles, please. बताइए, वही तो वो तो बताइए एटलीस्ट। If they are ready, just ask them to come out. Copy. एक्सपीरियंस है क्रिस्टोफर। या हेलो। हाँ हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी। हाँ तो क्या सीन है? ओके, तो बताइए एसओपीज क्या होते हैं, क्या होता है उनमें, और पीडी के लिए क्यों जरूरी होती है? हाँ जी सर, एसओपीज बेसिकली एक रूल बुक टाइप होती है एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीडी that there are certain rules that every PD officer has to follow to maintain the uniformity, जिससे कि कोई भी ऑफिसर जैसे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करे। And sir, obviously हर गवर्नमेंट Wait, Asha is going backside of the रूल बुक होनी चाहिए। on the stairs. It's like that. 10-4. बाकी सर एसओपीज के अंदर ही आएगा 10 कोड्स वगैरह भी आते हैं एंड दे आर अ पार्ट ऑफ एसओपी। एंड 10 कोड्स का बेसिकली रोल सर ये होता है कि जो भी पीडी में सर जैसे बहुत सारे डिफरेंट लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, तो सर जिनको जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है किसी ऑफिसर को, बस इंग्लिश समझते हैं, बाकी ऑफिसर हिंदी समझते हैं, सर वो 10 कोड्स हर ऑफिसर समझे, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए 10 कोड्स होते हैं। बाकी सर ये है। I'm calling them out. You guys are ready? 10-4. M4 Asher is ready. सिचुएशनल बेस पूछ लेते हैं। पूछो। समझ लो कहीं पे एक रॉबरी हो रही है, ठीक है, वेंजी या फिर बैंक, कुछ भी समझ लो, एंड वहाँ पे हॉस्टेज आपका ऑफिसर है। They are out from the front side. एंड कोई हाई कमांड ड्यूटी पे नहीं है उस टाइम पे, सब आप सेम रैंक वाले हो, ऑफिसर है कोई भी, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको एक ऑफिसर कॉल देते हैं रेडियो पे कि जैसे ही हम अपना ऑफिसर सेव करते हैं उनको शूट डाउन कर देंगे। तो उस टाइम पे आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे? मतलब उनकी कमांड सुनोगे या फिर कुछ अपना सजेशन दोगे या क्या करोगे? मतलब कॉल किसने दी? नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर ने? नहीं, आपके सेम रैंक, Sir, let me know if it's a A or A+. सीनियर नहीं है वो आपके। 10-4. A+. 3 to 4, dispatch, where are the fingerprints of the other suspects of the last situation? I can see only 2 here. Taking lead from the left.
Last hostage of the 90C has been safe and secured. Backing out from the situation. Stairs and standby unit now. Back to Robert. Copy. Message. Message. ये वंटी का है। Got it. थर्माइट किसकी जेब से निकली थी? वंटी 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 के पास नहीं था। खेकड़े के पास नहीं था। कैस्पर के पास नहीं था। इसकी बैग में था। खेकड़े की बैग में था आपके। नहीं, डियास के पास था। माय बैड डियास 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 डियास। उसके पास प्रॉक शार्क नहीं था। बंटी के पास था प्रॉक शार्क। और किसके पास था प्रॉक शार्क? Jimmy sir, do you have your codes on? Negative. Thank for. खेकड़ा का लिस्ट है। सॉरी, ये किसके ऊपर से मिला था? तो हाँ, ये खेकड़ा का आई थिंक।
केकरा डियास का, सर ये सारा डियास का माल है। डियास 1 पर्पल 3 वाइट, पर्पल 3 वाइट, 1 पर्पल 3 वाइट। वाइट जॉइंट लॉकपिक लाइटर, लॉकपिक लाइटर थर्माइट। We will continue with the Del Perro. Taking gap. Do let me know if I take jump. They didn't take the jump. And go just behind you. Keep visual. They're trying to continue on the Del Perro southbound against the traffic La Puerta freeway. Attaching. Took a U-turn. Jump inside, I guess. 10-4, he will try to. Going for the red garage jump. Already at the red garage. Second oil line बंटी की In front of पेट्रोल वॉल्टर लॉकपिक प्रॉक्शर, लॉकपिक हैंडकफ वॉल्टर एंड पेट्रोल। Message. Take to Tyler. There's a guy waiting at the reception for the interview. $20 of the 80, please. वो हैंडकफ, Brook Avenue. Copy. हैंडकफ लेटर की जगह हैंडकफ। East Palm. Message. They took a right towards the Jamestown. They took a right currently Carson Avenue going northwestbound. Currently near the Mega Mall. Crossed Taco Shop. नेक्स्ट लाइन किसकी है? ये आई थिंक होगी They शगन took a की। right again. बंटी के Going towards the चार train वाइट 4 station. पर्पल बंटी के। ओके 4 वाइट Street. 4 पर्पल। Continuing straight 4 white, near the 4 Arcadius right now. Robert, do you still need a comms? Negative. Time to contact. I'm just moving parallel. Contact. वो लाइटर भी था इसका। Visuals. I'll be following. About Mustang. Sorry, sir. Yeah, no issues. Visuals. Then for have visuals currently near Occupation Avenue to the right near Pinkage. केकरा। Again to the right to Hospital Box. Go ahead with the comms, Rana sir. लाइटर पेट्रोल कैन। Inside tech, no need of comms, right?
Sure, you had a headache. If such you're having very bad headaches. ट्रांसफर का क्या Taking secondary for now. वाइड जॉइंट और M45 1 Requesting for the lead from the left. Time for take it from the left side. I'll come from the other side. Currently far and right. Going towards the Mega Mall. 215, show me 41 dispatch and actives. Time for active 80 of 90C. You want me to be a part of it? Roger that. If you need additional, just let me know. Time for that. चलो हो गया रिपोर्ट कंप्लीट 3 to 4 back turret after a code 50 Tempo. For day to Ryan. 10 for guard There's a guy waiting at the reception for the interview. Can you just 10 for LS photo चलाता हूँ अरे वो तो कोई Hello? बात नहीं लाओ दो actually Hello? both of you are here for the interview Yes, yes, sir. so could you please provide me with your ID card one by one अरे मैं अपना आईडी कार्ड गाड़ी में भूल गया रुको मैं लेके आया एक सेकंड ID sir Yeah. ID by There you go, sir. ID Jackson consent for search do you have a consent Yeah, for sure, sir. you don't need to put your hands up you're not a criminal I'm just searching you No, I think maybe you won't be able to. well Any other vehicle? why do you have a baggie of weed sir may I ask They're going towards the canals. Sir, baggie of what? a weed बाइक है बाइक क्या पॉप कर दो टायर I don't understand, sir. Like, please what do go you harsh want? on them. Don't go why easy do you on have them. a OG Referring to- baggie The officers. with you Let me check, sir. I don't know. I actually drive a taxi, and I don't know, like. पॉप द टायर्स पॉप द Okay, yeah. What is that? Like, I even don't know about it. then why do you have it on you the bike कहाँ पे I don't know. Like, that's what I'm telling you. I drive a taxi. Like, I meet multiple people, so they just tip me with different things. You see, like, I have cookies and cheesecake. You can take it. Like, that's not mine. I have fuel on one bike. Yeah. I'll be taking the switchblades as well Alright. Yeah, for sure, for If you sure. need a bike, You can have the I switchblade can take after it the out interview. if Jimmy sir will give me permission. Yeah, for sure, sir. Currently going You to could have got You have a license. arrested for that, but I'm just letting you off the hook for now. Thank you so much, officer. Hello, Where's the sir. other guy? How are you doing? Following one bike. Good job, man. I'm doing Yeah, tires good. are popped on. Very Even good, I'm very good. following one bike near So- Davis venue. So I'm here What's for the the name? interview, sir. My name is Eddie Jackson. डिस्पैच Eddie don't have any Jackson. vehicles हम Hmm. पॉप पकड़ Yeah. के ऑन फुट ऑफिसर्स वैसे Good, रहेंगे good, उधर good, good. अब इंटरव्यू हो Thank you, रहा sir. है? Thank you. Copy, Rana sir. I'll be providing you an ID. हाँ हो रहा है ऊपर चल रहा You may have a seat, man. Going for the jump? And if I'll you be need to escorting him drink upstairs. something, I'll be escorting you him can have a Starbucks coffee right there. Okay, sir. Thank you. I will have a seat Near then. Carson Avenue. Yeah, be But seated. this one is Alright, I'll escort you to आजा Any past experience you have? With me, sir? Yes. What past 91 is experience? near the Oh, sir, I am providing an Hello. सर आपका Yeah. नाम Sergeant Yeah, Ryan what's your Knight past experience? सॉरी it's Sergeant Ryan Knight सर थोड़ी देर पहले हमारी स्लेट सर के साथ इंटरोगेशन होती रही आप भी थे वहाँ पे I just saw the brief moment I saw you yes आप राना सर से पूछ सकते हैं या स्लेट सर को कॉल करके पूछ सकते हैं उन्होंने मेरे को ये सीट्स आपको हैंडओवर करना Yeah, I'm पड़ेगा alone स्लेट on सर the को मैंने city. कॉल एक किया second था hold on Crew sheet will be P2 alright. The reason, 10-4. yeah, like it was related to drug selling. P2 currently near Covenant.
स्लेसे को कॉल कर दीजिए, मैंने भी अभी कॉल किया था उनको, तो उन्होंने बोला कि राना से होंगे या कोई और होगा, तो उनको जस्ट जाके बोल दीजिए कि आपने दे दिया currently near car wash. The Canadian wine list. I get it. I get it. What's your biggest achievement till now? I actually got the main brain behind the drug selling in that event. What's your name, by the way? To you right now. Katto की right. It's coming out from car wash. Operating behind these scenes. हम लोग हाँ हेलो, वो कट्टवा ही है। तो वो कुछ बोल रही थी कि कुछ काम था। कौन बोल रहा है? अरे उनको बोलो सीट देने थे। कौन बोल रहा है? कुछ स्लीट, अरे आई एम रायन डूड। अच्छा अच्छा, बोलिए सर। हाँ वो कुछ स्लीट वीट समथिंग अबाउट दैट। अरे सीड नहीं, वो सीड लेके आई है। वो सीड, हाँ सीड लाई है, सीड का ही मैं बोल रहा हूँ। सुबह वो अरेस्ट हुई थी। ठीक है, तो जरा के देख लो क्या है। अरे नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अच्छा ठीक, तो मैं करूँ क्या? बस कॉन्फिस्केट कर लो किसी भी लॉकर में डाल दो। कॉन्फिस्केट लेके क्या करूँ? किसी भी लॉकर में डाल दो, 999 में डाल दो, 999 I'll attack him. Excellent. Bye bye. Josh, which one a bike which was tire was for? Official, how much time? Wait. 20 of the bike. ID card please. Covenant Avenue. Consent for a search. Yes. Currently near Mega Mall. Finally. Do I have a consent for a search? Yeah. You don't need to put your hands up. You're not a bloody criminal. Chill out. What are you doing with the handcuffs? And I need to search that bag, by the way. आपको मैं बैग दे दूं? अगर I'll take it चेंज myself. करते हैं फिर पॉप कर दो। Even if it is car, the reason is वो फोर्थ व्हीकल होगा। Handcuffs का क्या है? ये हैंडकफ व्यू से लिए थे, ये एक दोस्त हैं बहादुर, वहाँ पे जॉब करते हैं, अगर आप चाहो ले लो। अच्छा बहादुर का माल है, पकड़ो। What's your 1020? Forum drive. ऐसा कुछ All right. Both of you follow me. Bike unit, please. Yeah. I'm on the way. Let's go, sir. Almost there. Follow me. Up in the waiting room. The 80. All the best for your interview. Thank you, sir. Thank you. Going towards the Maze Bank Arena now. Negative, he went towards the Grove Street canals. Take them as well. He's going back towards the highway. On the radio. उसके पीछे डंडा डाल। मना करा था तुमने हमको। अरे गाली नहीं दी। वो बख्शोद बंटी और हम मस्ती। We have 2 more guys for interview. 2 और हैं। अर्जुन लेगा इंटरव्यू, अर्जुन लेगा। यही रुको। भाई हमको ऑफ ड्यूटी जाना था यार। नहीं अर्जुन, तुम ही लोगे इंटरव्यू। दोनों हो गया? रुक जाओ। कम भेजो इसको। Yeah, let's go, sir. सोचना इस बारे में, ठीक है? Kane 20. Wait a minute. Ryan? हाँ. He's Julia, right? Yes. So I think he's underage. He's underage. I'm not. I'm 18 years old. Well, he is underage. Yep. ये कौन है? He's I guess underage. Let me just check. अमेरिका में तो 16 साल होती है। इसका नाम क्या है पहले ये बताना। का फॉर्म आया था हमारे पास। I don't know, इसलिए मैंने अभी के लिए वेट करवाया कि इंटरव्यू रूम में वेट करो करके। फॉर्म्स हम तब चेक करते हैं जब when we take them for interview. आपका नाम क्या है? He's Eddie Jackson. उनका नाम है। हाँ मेरा नाम हाँ एडी जैक्सन। मैं इनका देखता हूँ जरा देख लियो। Eddie, you can go in for the interview. हाँ चलिए सर। Go in through this door. And we'll take care of this guy. जब तक वो take care of, तू देख ले इसका क्या। बैठ के नहीं, नीचे चलो तुम। एक इंटरव्यू तो ले लो, क्या पता मैं तुम्हारे शायद से ऑफिशियल से ज्यादा बैठे। हाँ भाई ये बकैती मारना है। मोहल्ले देख रहे हैं वो क्या नाम नहीं हुआ। They're going up on the roof. Dispatch, the radio frequency is 72.22. Check the how many years out there. घरों के ऊपर छोड़ रहा है। They took a jump. Eddie took the jump on the right side.
Push the office. Did he? Is it shootout? Shoot out. No, I mean warning shot. Don't shoot until unless it's a code red. Okay, if they shoot only we have the permission to shoot. Don't shoot from your side first. Visual. अच्छा Officer नीचे गिरा बेटे ने कौन बनवाता Have है the आपका way. बैगी? बेटे ने And और भी है बाहर it's Christopher. थक गए भाई। Inside. dispatch. Use your batons now. हाँ खोल रहा हूँ। Yeah. 324 would be 76 till it is 9 on call. Tony, do we have the other suspect? Yeah, I have one suspect in custody. 10-4. Bad. Somebody did a 9 here. हाँ हाँ मैंने ही किया था सर। ये हाँ। थोड़ा आप गाड़ियाँ इम्पाउंड कर दोगे? हाँ हाँ अरे कर रहा हूँ। नहीं करके रख दिया। होनी तो चाहिए वैसे, बट देखते हैं। वही इशू है। One of the suspect is with Tony, right? काम करो। And for having him in custody. Yeah, and other two बाइक guys कौन ran लॉक away. करता है बे? बाइक लॉक। Tony, you go, I'll do this. You'll take care of the bike? Yep, 10-4. Rada ये sir. आकाश लॉक। ये हो जाए। ये किसकी है? पता ये टेस्ट ड्राइव की आई थिंक तो पता नहीं। आई नीड तो 1 मिनट है, 1 मिनट में जब फोटो दे। अरे यार नहीं हो रहा, बैठ नहीं पा रहा। रुको मेरे पे भी है, मैं करता हूँ। रुको रुको रुको। Officer real Leotoni? Yes. Sandy's, I'm at Sandy's. हट नहीं रही है। नहीं होगी। ठीक नहीं है, हो। छोड़ो फिर। एक बार वो कमेंट देख लेना। कमेंट सही पाक दो। Officer Arjun Kapoor. बट वो उसका ओनर आई डोंट नो कोई है यहाँ पे पीडीएम में, कोई है ही नहीं। वो रहने देता हूँ, आई वुड सजेस्ट। अरे भाई ये हो ही नहीं रही पेनुम्रा।
मैंने अभी यहाँ पे रिसेंटली जितने उनको पूछा कि है किसी की, सबने नहीं हो ना रही है, बोला। इशू ये नहीं हो रहा। टेस्ट ड्राइव की गाड़ी है ये। हाँ जी पता है मेरे को। अब नहीं हो रही, क्या करो? कि इसका ओनर 283 plus 115 76 to 19. पब्लिक पार्किंग Return थोड़ी candidate to Arjun. यही नहीं, ओनर ऐसे ही छोड़ के चले गए। क्या करो, नहीं हो रही वो, ट्राई किया। चलेगा, ठीक है ठीक है। Straight over dispatch the last 9 on the code for reviewing code on plus. डिस्पैच दोनों का सस्पेक्ट्स का कैश सब सीज कर दो। Dispatch the suspect who I am with in 16 is Kane Austin. Return candidate to Arjun Kapoor. Dispatch officers pillbox lower garage. I need you on Ward C, please. आइन ये क्या था? जो उधर ठीक है। भाई वो रिपोर्ट एक बार देख लिया, बन गई। चोटरेड की रिपोर्ट देख, कोटरेड की रिपोर्ट बाद में देखो, गई। पहले मैं वेंजिलिको वाली बना रहा हूँ। बना बना। एक का नाम केन ऑस्टिन है, दूसरे का नाम क्या है? हेनरी आई थिंक। हेनरी के क्या स्पेलिंग है? पूछिए रेडियो 1 पे सेकंड सस्पेक्ट का नेम केन ऑस्टिन एंड केन ऑस्टिन था कि ये हेनरी ऑस्टिन और अंगद सिंह है? Okay, एविडेंस dispatch. उधर What कुछ is और है। the name of the other suspect? केन ऑस्टिन को उठाया भाई मैंने। गजोदर। ओ ये अलग सिचुएशन होगा, केन ऑस्टिन और गजोदर। 211 to dispatch. What is the name of the other suspect? Wait, let me ask Tony. Gajodhar. Am I 97? Tempo. तो रेडे पे बाकी दो नाम है। Switching back to Radio 1, the other names of the latest 90C are Henry Austin, Angad Singh, and El Jaffe. Robert, can you pick me up? Let's Parker.
अच्छा, और ऑफिसर नीचे गिर गई। एंड वार्निंग शॉट्स को भी डरते नहीं हो। अच्छा, कोई नहीं, इसमें वार्निंग शॉट नहीं देंगे, सीधा अंदर जहां मारना वहीं मारेंगे। Total 176, 19 plus 2 plus 150. अरे ऑफिसर, बोलो। ये हेलमेट कहाँ से लिया? क्लोथिंग स्टोर से, और कहाँ से? कपड़े की दुकान से। Currently native with the juggler. 315 direct to Nico. And it's there. What's your intent? I'm in Hello. the pet shop. हुआ क्या है? Illegal U-turn मार रहा है, right, pull अरे वो over to the गलती right. हो गई थी हमसे। Pull over to the right. मास्क हटा। I'll be यार right मार्क्स there. हमारी है ऐसे ये बचपन से। मास्क हटा। हाँ वही जेपी। और बताओ यार, हमसे गलती हो गई है, जाने दो। अरे यहाँ तुमने मेरे को पुल ओवर करा, इन लोगों ने पुल ओवर करा है। Could you please leave the area? By the way. तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। Please leave the अरे area. नहीं, मैं तो पूछने वाला था। अरे यार अपनी सर को नई वार्न गाड़ी दे रहा को हूँ, IPS अगले ने- टाइम किया ना, अगले टाइम किया तो मैं सिंपल सी बात है, मैं वार्न नहीं करूंगा, सीधा फाइन अरे करूंगा। गोली ठीक? मारनी है क्या? लाओ मैं चलाऊंगा 20 माँ की खुशी। हाँ बोलो बोलो ऑफिसर बोलो। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगले टाइम देखा हाँ कुछ वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधा फाइन मारूंगा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक। Last 10-11 on a red juggler is a code 4. Code 1 on the bike unit. अरे यार जल्दी जल्दी सामने चल, जल्दी सामने जा, पिंक कलर की गाड़ी है, जल्दी। हाथ खोल। बाइक में बैठ। चाबी ला एक बार, जल्दी चाबी ला, बैठ। चाबी दे, बैठ और चाबी दे। पकड़। दे दिया। क्या हो गया? तेरे साथ क्या हुआ था? उसका इंटरव्यू नहीं लिया था, मेरा हाथ पकड़ के। किसका इंटरव्यू नहीं लिया? जूलिया की। था। पिंक कलर की गाड़ी में घूम रहा है। फोन कर जूलिया को। कहाँ है जूलिया? मेरे पे नंबर नहीं है। भाई हाथ कफ कर दिया। मैं साला वही सोचूं कौन इधर भगे जा रहा है, भग रहा है। मैं ऐसे ही यहाँ पे टर्न मारा, मैं बोला कौन भग रहा है करके। ऑफिसर यहाँ पे अकेला, वो भी एक अकेलौता ट्रैकर आउट ऑफ नोवेयर। पीडी से उठा के ले गया मेरे को। हैं? हाँ पीडी से किडनैप किया उसने। मेरा एसएमजी पॉइंट की साले ने धक्का दे दिया मेरे को। वाह वारना। एक ही जगह होगा वो लास्ट। ओए बाइक दे।
अबे ले ले, तेरी बाइक तू ही ले, मेरे को नहीं चाहिए बाइक, वहाँ तक चल। लियो अरेस्ट करना ना। कहाँ हो, कहाँ हो, जल्दी बताओ। तेरे नाम का वारंट मैं निकाल रहा हूँ। अबे ओ नौकरी नहीं दी, सेंस बन रहा है साले, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं है तेरा, नौकरी कैसे दे दूं मैं तुझे? यू आर नॉट एलिजिबल। स्मार्ट तेरी बंदी स्मार्ट। ये क्या? तेरे अंदर इतना आग लगाऊंगा ना फ्लेक्स। और किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, जूलिया को कोई बुला सकता है, कोई है जो जूलिया को बेट करा सकता है? क्या पता, वेटर चाहिए उसके लिए कोई, वो भी जो मास्टर हो ये चीजों में। मास्टर बहादुर वेटर तो चाहिए। उसको फंसाएगा नहीं, बहादुर को बहादुर कुछ पूछो। करेगा नहीं। बहादुर को $20,000 का मिलता है। बहादुर बिक जाएगा, वो उसका एक चीज है, बहादुर बहुत जाए। जल्दी बिकता है। बहादुर की वही एक स्पेशलिटी है बहादुर बस जल्दी बिक जाता है। Hey. The time detain भी वहाँ चलो हमारे ओए चलो आओ, हम इंटरव्यू लेते हैं, आ जाओ। रायन समझी निकाल रहा है, समझी निकाल रहा है, समझी निकाल जाने रहा जरा है। ना। रुको भाई रुको। 12 एक सेकंड। हाँ। तूने किया वो जो निको सर ने बोला था? क्या? यूनिफॉर्म एसयू। अरे यार नहीं, कहाँ वक्त मिला यार, मेरे को टाइम ही नहीं देख मिला, ले क्या जब भी करता। टाइम मिले कर दे, हमारा कर भी देता। जल्दी से यार। कल निको सर भी जाते जाते भी यही बोल रहे थे कि हमारा आ जाएगा तो थोड़ा और मजा आ जाएगा। एसयू एसयू का तेरे हिसाब से कैसा होगा, या कुछ मेरे एसयू हिसाब का, से? एसयू का मेरे हिसाब से समथिंग दैट्स कंफर्टेबल एक तरीके से भी, और इतनी सी गाड़ी होती है, अंदर जगह कम होती है, देख ले। हाँ बट वो हाई तेरे हिसाब स्पीड भी से रहता है, देखता हूँ। अपना वो बोल चार्जेस बोलना हूँ, किडनैपिंग इसका कैश भी चीज होती समझ अरे हाँ अच्छा वो ले लो यार, वो डेसिमल में दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा अबे तो साले रॉबरी करके ये करते हो? 282 looking for a ride along. Then for Did you hear what I heard? रेडियो पे तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? नहीं मैं अभी आया नैप लेके। नहीं, I heard something. need a ride along at 19. व्हाट्स द जेल सर था? सर था 35।
can you come in? Jimmy, you boy? Nico, I'm here. Yeah, come this side. आर्मर एसयू का बना रहा हूँ बैठ के आर्मर Two three nine back 10 after code 50. 239 to 211. 239 back to 211.
41 is a good choice. Two down, one back, 10-8. Message. Three to four to dispatch any actors. सुन 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 इधर आ इधर इधर सुन मैंने ये यूनिफॉर्म सोचा राणा सर को दे दूं हैं राणा सर के लिए ये यूनिफॉर्म हाँ ये कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म है या तो फिर ये अभी ठीक है बट मजा नहीं है यार अब क्या चाहिए तेरे को वैसे ही डालते नहीं है ना ये तो एलटी की है माय बैड अरे माय बैड वैसे ही डालते हैं जैसे तूने अभी डाली Dick to Ryan, can you 76 at the pier? will be 76 रुक बाइक यूनिफॉर्म Two down, one back, 10-8. Sartas 20. हाजी सर रेडी सर क्या नाम है रेडी राइट Sartas 20. 3 to 4 76 to the pier Upper with the garage, bike sir. on it काट क्या रहा कॉल को कोई कॉल है क्या Run से 20. Upper garage. नहीं कॉल नहीं है कॉल नहीं है रॉबर्ट बुला रहा है बैक साइड 334 बैक ऑन रेडियो 10 पर हेलो रायन फ्री है 10 मिनट के लिए कौन बोल रहा डेनवर हाँ डेनवर बोलना पीडी आ जाना मेरे को रिपोर्ट लिखानी थी वो तेरे गन शॉप से थोड़ी रिलेटेड है तो तू ही लिख दे रुक मैं आ रहा हूँ एक सेकंड मैं जरा एक सिचुएशन में हूँ मैं निपटा के आ रहा हूँ फाइन ओके 239 plus 1 code 1. Yes. Okay.
सर करते हैं तेरे दिल में सर है तो शुक्र करें बेकार होता हाँ तो रुक बड़वे को आए बड़वा मेरे को बुला रहा बोलता है धमकी दे रहा मुझे बोलता है कि $10,000 दे चल बे बोलता है SMG लेके आ रहा हूँ बोला तो SMG भून देंगे और क्या चलाई हल्की सी गन भी निकाली बोलेंगे रख वरना चला देंगे हाँ बड़वे SMG लेके आ रहा था ना खड़ा हो पियर पे कहाँ है तू साले रास्ते में है अबे आ जल्दी आ ये तेरी ये ताकत है तेरे में अंदर आ काट दे अच्छा रुक अभी ना इसकी ना पुन मारता हूँ एनोनिमस कॉल Dispatch performing a 10-11 on a four-door sedan at near the suppressor. ठीक है रायन आवाज यहाँ कहा गए वॉइस चेंजर वाले सस्ते कम से कम वॉइस मोटर तो नहीं है 24 घंटा अबे साले मैं थोड़ी ना मैं थोड़ा ना यूज करता हूँ मेरे को क्या तोड़ रहा है जिसको तोड़ना चाहिए उसको तोड़ना चाहिए मिस्टर जूलिया आप कहाँ पे हैं सस्ता भाई छी कपड़े बदलने को कहाँ बदलते हैं कपड़े कौन से सिटी के बाहर पलीटो साइड में तो आप हैं ही नहीं हम पलीटो वाले ही हैं हमारे पास बहुत बड़ा काम है आपके लिए चूती है क्या भाई काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कपड़े अरे भाई ठीक है भाई ये कर रहा है तेरा बेटा आप मुझे ये बताइए मिलना कहाँ पे है बहुत बड़ा काम है मेरे पास आपके शायद इसके बाद जिंदगी बदल जाती Yeah, sir. Go ahead. इसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाए 280+1 performing a 10-11 near fast lane with one भाई occupant on a four-door SUV. No additional squad. तो मैं कहाँ मिलूँ आपको कहाँ मिलूँ Sir, it's gym time. हारमोनी स्टोर के पास ठीक है मैं वहीं वेट करता हूँ आपका और अबे साले अबे चूतिया बना रहा है मुझे बोलता है हारमोनी स्टोर के पास अबे साले सस्ते वॉइस चेंजर तेरी तो मैं जिंदगी बदल जाएगी सही है 6012 अबे तो जेल ले जाके जिंदगी बदलेगी ना उसकी ऐसे थोड़ी बोला गन डीलिंग कर रहे हैं हम कपड़े बदल रहा है कपड़े नहीं बदलने दे रहा ये कपड़े बदल रहा है कहीं तो मारने का चक्कर क्लोथिंग स्टोर्स पे चल मारते हैं Vehicle belongs to James Johnson. तू पलीटो जा मैं सिटी के क्लोथिंग स्टोर देख कर रहा आजू बाजू अलग क्लोथिंग देखता हूँ कोई माँ आई Two double one going forward will be back after tsunami.
10-4. Welcome tomorrow. Switch to 10:40. 239 dispatch need a ride along partner. (239) to dispatch need a ride along partner. 10-10 from my side. 10-10 from my side. Message. You are going 42. Have a nice day, everyone. 10-4, you do. भाई हटा लो इलीगली भाग गया बाइक हटा रहे हैं तो जा रहा है 10:43 क्या चल रहा है सब 10-4 378 1041 reactive 10-10 for now कोई सक्रिय दल राइड अलोंग पे आना चाहेगा 10-4 Take Ryan. 10 for guard 45 apartment.
10-4-76. 91 at BC. I'm currently on bike unit. Negative from my side, can you in the situation? Edwin. 10-10. हाय स्टार्ट क्यों नहीं लोड हो रही? रास्ता Disregard the last person, right? 10-4. 3-2 would be 76 to 19. back 10-8. Sharky 20 क्या है तुम्हारी? Two 3642. 10-4. 20. Despite this 3-4 would be going 42 for the day. Have a great one, guys. भाई हो गया मेरा आज का. चलो भाई मैं मिलता हूँ कल. Bank with another live stream tomorrow. So yeah, bye bye. Bye. Oh, so I sing a song, girl, I'm really sorry. I sing you a song with my ukulele. 'Cause lately, baby, I'm in the wrong. You had enough. I wanna sing you a song with my ukulele. 'Cause lately, baby, I'm in the wrong. You had enough.